in the journey of Ganga from Gangotri till Ganga Sagar, Hmm. गंगा कहीं पे भी उत्तरायणी नहीं है. उत्तरायणी का मतलब है कि साउथ से नॉर्थ कहीं फ्लो नहीं करती है. गंगा स्टार्ट्स इन द Okay. नॉर्थ फ्रॉम हिमालयाज एंड इट कंटिन्यूज टू फ्लो साउथ. इट गोज Hmm. टू हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस. बनारस में आके गंगा डज अ टर्न एंड व्हेन यू विल सी गूगल मैप यू रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड गंगा बिकम उत्तरायणी, सो इट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द होल जर्नी ऑफ 2400 किलोमीटर्स. गंगा कहीं भी नॉर्थ फ्लो नहीं कर रही है साउथ से. Fascinating. या जब साउथ से नॉर्थ हुआ तो बनारस गंगा जी के लेफ्ट साइड में बसा, जो कि हो गया आपका वेस्ट. तो जब सनराइज होता है, और जिसके लिए बनारस नेशनल ज्योग्राफिक में कवर हुआ और दुनिया भर के मैगजीन में फोटो आती है घाट की, इसलिए क्योंकि बनारस घाट के मतलब गंगा जी के पश्चिमी तट पे है और पूरब से सूरज निकलता है. एंड दैट गिव ऑल द फोटोग्राफर्स द मैजिक दैट दे हैव बीन कैप्चरिंग. एंड Oh God. और अगर उस रास्ते पे जा रहे हो तो पहले रास्ते में रुक के जो बनारस में सबसे फेमस कचौड़ी सब्जी है वो खा लो. Very important. सबसे Please इम्पोर्टेंट है tell. बनारस का सबसे मेन खाना. सो वो उस रास्ते पे ही पड़ता है. नाम है चाची का कचौड़ी सब्जी. चाची तो अब नहीं रही, शी आई थिंक एक्सपायर्ड अ फ्यू इयर्स बैक. हम लोग Mm-hmm. को देखा है बनाते हुए जब हम लोग बच्चे थे. अब उनके बच्चे लोग संभाल रहे हैं. Mm-hmm. मतलब जितना बड़े में रूम में मैं अभी हूँ, इससे छोटा सा उनका दुकान है. And it's like one of the best. या 40-50 years old. बेस्ट कचौड़ी सब्जी इन द वर्ल्ड. आई नो. मैं कलकत्ता का भी लुची आई लव अ लॉट. आई लव पूरी सब्जी इन मथुरा ऑल्सो, बेदमी पूरी. Oh, I love it But too. Banaras, I think, sets very high standards on this. I can tell you that. एंड कचौड़ी सब्जी पर्टिकुलरली आई थिंक लोगों ने हर जगह की तारीफ की है, बट मुझे लगता है बनारस से बेटर कोई नहीं बनाता. एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद नॉस्टैल्जिया. आई एम टॉकिंग as objectively as possible. Pure taste. So you have to do that. Banaras, Kashi, Varanasi, call it what you want. But this city is like no other. It's ancient, chaotic, spiritual, and somehow also full of the most incredible food. One moment you're lost in a maze of temples, and the next you're standing by the Ganges, watching life flow literally. And somewhere in between all this, you're stuffing your face with all the chaat because let's be honest, that is a must in Banaras. Today, I have with me my guest Pushpendra Kumar, who doesn't just love the city, he lives in it. Having spent a large part of his life in Banaras, he knows the city inside out. From the legends of Kashi Vishwanath Mandir to the hidden gems tucked away in tiny alleys, from BHU life to Bhangwali Holi, from Buddha Saranath, and yes, even having ramen in Banaras, he's got stories that will make you want to pack your bags and book your next, where he's specific about this train to Varanasi. And let me tell you, Pushpendra isn't just full of stories, he's absolutely hilarious. Whether it's his anecdotes about student life, or his very deep and passionate love for chart, or his take on Banaras's larger than life festivals, he'll have you laughing all the way through. Also, we recorded this conversation in January, just a few weeks before the 2025 Mahakumbh kicked off, and we're releasing it just after that. So, my dear listeners, settle in, grab a chai or maybe a lassi if you're feeling fancy, and get ready for all the fun, food filled, and laughter packed ride to the oldest living city in the world, Banaras. But before that, let's take a quick little break. Hey, do you know we write a travel theme newsletter every fortnight? Yup. And in each newsletter, we write about different destinations and travel experiences from around the world. You can choose the travel destination that you want to go next right from our newsletter. We also have a service of curating travel itineraries personalized just for you. Head over to misadventuresofasneaker.substack.com or contact us on Instagram. You will find all the links in our show notes. Thank you. All right. Now let's get going. Big welcome, Pushpendra. You have a huge, hype created around you that you're going to be that you're a phenomenal, good storyteller. So you're coming with a lot of expectations. I'm not going to say no pressure because I'm really excited about it. Thanks, Revati, and all this so-called hype that got created in your mind, right? Of course, no pressure, but definitely I'm going to meet the culprits who created the hype soon. And I'm doing a visit to India in the next month, so I'm going to come across some of those folks. So welcome to the podcast. This is Misadventures of a Sneaker.
It's a travel podcast where we talk about a lot of places around the world, lot of stories, lot of experiences. And Varanasi is like a big thing in India for the especially last 1 year, right? Yep. Everyone wants to go there and everyone wants to experience a place. So I've been looking for someone who knows a lot about the place. I don't want like upar ka, even Chat GPT will just give you like top 5 things to see in Varanasi. I would Right. like to know a lot of stories about the place and things like that. And that's when I found you, someone who's lived there, studied there, continues to visit the place very often, vagara, vagara. So I'm very excited to be talking to you. So Pushpendra, welcome to the podcast. Very happy to have you. Thank you so much again. And we chatted a bit on this earlier. And as you know, I spent the majority of my early life in India, and pretty much everything in Banaras except for 2 years in Delhi. I've lived Mm-hmm. most in Banaras, and then I've lived outside India most. So that's how much time I've spent in Banaras. And most people in my town in Banaras, they leave Banaras after their schooling and all to go out. बट गुड थिंग फॉर मी वाज दैट आई कंटिन्यू टू डू माय अंडरग्रेड्स देयर और जब तक नौकरी मिल नहीं गई कि हाँ रोटी कमाने जाना है बाहर आई डिसाइडेड टू नॉट मूव जब तक किसने धक्का मार के निकाला राइट नहीं. राइट जब तक पेट पे और रोटी पे बात नहीं आ गई आई डिसाइडेड नॉट टू मूव but yeah, and thanks again for your warmth in the previous conversations, and I am hoping that it would be a lot of fun because there are hardly few places in this world like Banaras, and I've traveled quite well across the planet, and Banaras Mm-hmm. has something unique. So I'm really looking forward to this. And as much as you rightly mentioned, ki touristy traps and everything which happens in a place like Banaras, which explodes suddenly, right? And Yeah. you'll see 20 articles that 10 things to do in Banaras, 10 things to see in Banaras, 5 things to eat in Yes. Banaras, and the bloggers are flocking in from the country. But the Correct. reality remains that besides, the whole halla that you see and the whole Goafication of Banaras, which I call, No, you see, right? Goafication. Nice, good one. Right. Banaras offers a lot beyond the ghats and the jalebis and the samosas, and that's the beauty of Banaras. Banaras is not about the city; it's about the people and city become one in Banaras, and I think that's the magic. Every person would talk to you about Banaras differently, and that's what makes Banaras very unique. So beautiful. Yeah, Oh, that's really beautiful. And then because तुम इतने साल रह चुके हो, you've got like different versions of it through your many relatives who are there, many yeah, friends who are there. And like you said, तुम तो college भी वहां पे किए हो. So correct. were you like a tourist guide to your friends when they all reached, I'm assuming you're talking about BHU, right? Yes, yes. Yeah. So, one good thing about Banaras is that it's not massive in size, right? Mm-hmm. Of course, massive का definition India में अलग हो जाता है. Having 20 lakh people or 2 million people in a city is not massive in India, but this is almost the size of the second largest French city, right? So, Of so, course, yeah. people when they come to Banaras, of course, सब proper touristy चीजें पता है, but college is different, that everyone knows कि हम लोग 4 साल के लिए आए हैं. 4 साल बहुत होता है. अगर आज ऑर्गेनिकली मैंने स्टार्ट किया बनारस का सबसे पहला एक्सप्लोरेशन इन 4 years आई वुड हैव सीन एंड डन एवरीथिंग. So I was not like a local guide to the folks who flocked in from outside or who moved to Banaras to do their undergrad. But definitely local होने का बहुत सारा दूसरा advantages था कि यहाँ कोई बहस नहीं करता था. No one You messed. like you were like the dada in the group, is it? Essay. I would not call it dada. Probably back in the days I would have called it, but now age has taken a toll. I would call me. I was very amicable, but you know mildly friendly, mildly dominating kind of local तुम guy मेरे to इलाके में आए this. हो भाई, that kinds. Yeah, and Nice. it's a funny thing, right? Because a connected context to this is that so I studied in VHU also. My schooling was also from Kendriya Vidyalaya VHU. My dad used to work in a bank in VHU, and my house is literally half a kilometer from the VHU gate. So Oh my God, मेरा wow. पूरा जिंदगी वो 2 किलोमीटर के रेडियस में ही रह गया था. My first year hostel was like 1 kilometer from my house. God. And the funny thing is that during my 12th and during my 10th and 12th, all the folks that I met and all my close friends, हम लोगों ने साथ में IIT क्लियर किया. And we had our ranks ranging from 1200-1300 से लेके 4000 के बीच में. We were like 13-14 friends who grew up together from childhood. Hmm. Everyone had an opportunity to move outside. किसी को आईटी बॉम्बे मिल रहा था, मेरे को आईटी बॉम्बे में कुछ मिल रहा था, किसी को दिल्ली Hmm. में कुछ मिल रहा था. और सबके बाप लोग चाहते थे कि हम लोग निकल जाएं बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ वी लिव इन बनारस. ठीक है पढ़ाई वढ़ाई तो कर रहे थे बट एट द सेम टाइम
बनास का एक अपना रंग है जो चढ़ जाता है लोगों के ऊपर, क्रिकेट खेला, लड़ाई होगी, डंडे से पीट दिया किसी को कुछ भी होता है। We तो have seen Ranjana movie, so we have seen some references. हाँ, एक्सेप्ट कि धनुष और पढ़ाई नहीं करता था, तो हम लोग पढ़ाई करके भी बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्व रहते थे। तो ऑल ऑफ अस वी वेंट टू Hmm. आवर काउंसलिंग टुगेदर फॉर आईआईटीज, एंड जैसे ही हम लोग के पिताजी इधर उधर देखते थे, वी यूज्ड टू फील कि आईटीबीएचयू इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल। एंड व्हेन आई मूव्ड, सो माय बेस्ट फ्रेंड ही एंड मी, वी बोथ जॉइंड आईटीबीएचयू इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2005, और हमारे साथ बनारस के 9 या 10 लोग थे हमारे बैच में आउट ऑफ 50। Goodness, your entire gang joined together. Oh Yeah, God. 9 and 10 people from the same city, not even from UP, not even from Bihar, just from Banaras. Just from 1 kilometer away, also, Yeah. maybe. So that was the funny part, that as much as I would have loved to be the only local and kind of do the domineering, but सारे दोस्त मिल गए और सारे लोग मिल के we had great blast, and of course then we met people from different places and great times. But reality वही था कि 12वीं के बाद we all kind of the same guys that we were together from childhood. We reached the same college and then we were together till 2009 when we graduated. And जब तक नौकरी वाली बात नहीं आई, most of the gang stayed together. Oh, such nostalgic, happy. Anyway, college तो वैसे भी is one senti So thing for all of us. One of the most happiest times and all of that. And when you think that your school and college together had the right, same kind of gang, very it's so lucky. good. Very lucky, very lucky. Yeah, yeah. So tell us, Pushpendra, what do you do? Where are you from? What do you do these days? Tell us more about yourself. Sure, sure, Revati. So right now, as we discussed, I'm in Indonesia for the last Mm-hmm. more than 7 years now. Wow. Yeah, and currently I'm working with one of the leading telecom companies here, and mostly my career in recent few years has been around technology and products. So that's what I've been doing in Indonesia. But prior to this, I spent close to 5 years in Singapore and another year in Germany. So yeah, You've gone around a lot. Like you've gone around and lived in places for long periods of time to know those kind of places well. true to certain extent, yes, yes. And I started my career in Delhi after ITBHU, of course. And Mm-hmm. Delhi, I spent like 3 years. Then I moved out. So Singapore to then Europe, then back to Singapore, then abhi Jakarta mein hu. Let's see how long I can continue my stay. It's a fantastic place to live. It's a great place, for expats. It's a great place to meet, people from varied kind of lifestyles and backgrounds. And life is Oh, quite good here in Indonesia. That's why I've stuck around for so long. no, that's nice to hear. Yeah, yeah. I have been to in my when I traveled to Indonesia, there was one day that I was forced to go to Jakarta because there was a volcanic eruption in Oh yeah. Bali. That was the year that I traveled. And I mean, see, I'm coming from India, and India is already a busy place. And when I saw Jakarta, I'm like, wow, Wow. this is really busy. So for me to think of another place that it's busy, like when you go to Hanoi or large parts of Vietnam, you will be like, oh my god, इतनी two wheelers कहाँ से आ गए? But then Jakarta जाके, I was like, wow, this is so busy, so busy. It's a really busy place. But True. you like life there. Nice. Yes, yes. People are very friendly in Indonesia. It's one of the most hospitable culture that I've come across. I've traveled to probably 50 plus countries already, right? और इंडोनेशिया जैसे लोग नहीं है, बहुत कम जगह पे मिलते हैं जो people are very warm, extremely humble, and surprisingly extremely modern too, which actually took me by a bit of surprise. But जब मैं 2012 में पहली बार आया था इंडोनेशिया, 2012 या 13 Mm-hmm. में, एंड दैट टाइम व्हेन आई लैंडेड हियर, ऑफ कोर्स बाली सबको पता था, बट आई लैंडेड इन जकार्ता, आई वाज डूइंग सम प्रोजेक्ट, एंड आई Mm-hmm. रियलाइज कि लग तो बॉम्बे जैसा रहा है, बट काफी चीजें यूनिक हैं, काफी चीजें अलग हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बेटर आल्सो इन सर्टेन वेज. तो आई वाज वेरी enamored by this place. Of course it's not like a global metro, of course it doesn't Mm-hmm. stand with the likes of the big European New cities. York or London Yeah. or something. Mm. तो उतना भी मल्टीकल्चरल नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स quite unexplored. It's underrated in terms of foreigners coming here. Of course, it's not a touristy place. Mm-hmm. I'll concede that there's not much to do. It's not an old city like where what we are going to talk about in some time. But उतना That's पुराना the शहर oldest in the नहीं. world, so nothing can come in Yeah, comparison. so पुराना शहर नहीं है. Dutch colonization के दौरान it had a difficult time. Dutch did not leave any stone unturned in making sure that the city goes to hell.
but very strong resilience of the people. It overcame the colonization. Very similar Mhm. story to India, and that's why I could relate to this country कि यहाँ पे काफी चीजें सेम तरीके से वाइब करती हैं जो इंडिया में होता है कि यू कैन सी द सेम बॉम्बे व्हेन यू वुड हैव कम टू जाकार्ता, यू वुड हैव सीन द स्ट्रक्चर्स, द lanes, the traffic. It gives a lot of vibe. The slums, and next to the slums, have like 100-story buildings. Yeah, That's a very Bombay thing here. That that's is a the very Bombay Bombay thing. vibe. True. And I never lived in Bombay, but a lot of my friends who moved from Bombay to Jakarta, they said, "यार ये तो जकार्ता से बॉम्बे से बॉम्बे में ही लैंड कर गए क्या, ये क्या हुआ?" So, so it does give that vibe. And again, I think the most important thing is the culture and people. It's a unique country. I think Vietnam is another one where people are extremely warm. But at least in my travels, I have come across very few places. Probably Morocco was one of those where I found people were very warm. But I don't think I've been to places where people have been so welcoming and hospitable. Wow. So you observe people and their how a lot, because that's one way you described, like you just said Morocco, that's one way you described Jakarta. That's exactly the same way that you describe Kashi Banaras as well. You Right. spoke about how people are and all this. So that's something that I think is very, तुमको बहुत पसंद है to observe and to feel and all of that, I think. Wonderful. Okay, so I'm going to ask you one thing, because you're like a local for Varanasi, right? Yeah, yeah. Do you still go back there in your work breaks and all of it? Twice a year. My mom and dad are still living in Banaras. अरे वाह. The real definition of family is Banaras. घर मेरा बनारस में ही है. Home is Banaras. Right. Very beautiful. I have not been to Banaras. It's only through, eyes of my friends and stories that I've read. And, the Hazar vlogs, Hazar kam bol rahi hu main, 20 Hazar vlogs that are circulating. And of course, I've read a lot of books about it. And so there's a lot of aura around, Banaras and all of it. But as a local there, how is life there as a person living versus, because we only get to see the life of a tourist, the 4 days or the 6 days that you go, you first go here, then you पहले तुम इस मंदिर जाओ, उस घाट जाओ, ये आरती देखो, वहां टमाटर चाट खाओ, फिर सारनाथ Right. जाओ. That's the only picture that we get. How is life of living in Varanasi? Is it very normal, or does the crazy touristy, even religious tourism ka thing affect day to day wala life as well? So I think this might not be unique to Banaras only, but almost every city, a uh, local's perception or local's day-to-day life is drastically different than what my friends who came from outside and who visited Banaras, they were telling me, यार पता है बनारस इस टाइप का है. मैं बोला यार पता नहीं, 20 साल से तो मेरे को नहीं लगा कभी भी ऐसा है. Like, for example, like what is the couple of things that will come to your mind? Sure, sure. So Hmm. that's what I said. So let's say लोगों ने first time I heard about the thing that बनारस का लस्सी is very famous, as you know, right? And someone told me कि यार तुमने मैंगो लस्सी नहीं पिया बचपन से. And Hmm. this includes my wife, by the way, who went to Hmm. Banaras as a solo traveler way before we met. And वो बनारस जाके she had some mango lassi at a touristy place near the ghat, and Hmm. she saw a lot of foreigners and everyone. And she was like यार मैंगो लस्सी तो काफी कॉमन चीज है बनारस में. मैंने उसे बोला यार पता है मैंने इंडिया में भी मैंगो लस्सी नहीं पिया था. द फर्स्ट टाइम आई हैड मैंगो लस्सी वाज एक्चुअली इन लंदन, और मेरे को तब पता चला कि मैंगो लस्सी कोई चीज होती है, क्योंकि बनारस के जो लोकल लोग हैं वी वी बाय आवर थिंग्स फ्रॉम द नेबरहुड शॉप्स, राइट? और उन्होंने कभी मैंगो लस्सी का नाम ही नहीं सुना है जो बंदा. So, I mean, this is a crazy example because my wife still argues with me कि हो ही नहीं सकता ये, और pulling my leg कि बनारस में मैंगो लस्सी मिलता है, ब्लू लस्सी मिलता है, all the stuff. Yeah, I've You'll be also heard of surprised. blue lassi, man. What is blue lassi? I have not had it till today, and I've crossed that shop few times. But मैं वही कह रहा हूँ कि बाहर के लोग when they come, right, of course, and this is not related to touristy trap. ये सच में these places exist. But जो local का day to day life में ये इसका appearance होना काफी मुश्किल रहता है. So if you think from the eyes of a local, right, Hmm. Banaras में, particularly if you grow up in older part of Banaras where I Hmm. grew up in the beginning of my childhood and teenage. So before I moved near BHU, which is considered the newer Banaras, Mm-hmm. because the funny thing about Banaras is the area that is between Varuna River and Asi River, which has become Asi Nala now, right? That is considered the original Banaras. That is Hmm. how Varuna plus Asi became Varanasi, right? उसके बाहर का area like BHU and all these areas that is being built up these days, they are all considered out of main Banaras. So the core Banaras is still those narrow gully and all, जो कि न्यूज में, मीडिया में, सोशल मीडिया पे हर जगह जो दिखता है. ओरिजिनल जो
लोकल जो 4 जनरेशन 5 जनरेशन से लोग रह रहे हैं बनारस में, वो लोग उसी को बनारस मानते हैं। वो लोग बाकी Mm-hmm. जगह को बोलते हैं कि वो शहर से आया है। तो Oh. so I grew up in actually those parts in the early till 1994 actually. Mm. From 1990 1987 to 1994 I lived in those older parts. There's a place called Sidhgiri Bagh, Mm-hmm. which is very close to the Dashmedh Ghat and all, and Kadaulia, which is like the main Vishwanath Mandir area. So वहाँ पे what we call कि जो बनारसी जो रियल स्पिरिट है, वैसे लोग दिखते थे कि हाँ आराम से उठ रहे हैं लोग, धीरे धीरे Oh. चाय पी रहे हैं Oh, the आराम से। chill vibes. हाँ अखबार पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे पिताजी को भी अगर 10 बजे ऑफिस जाना है तो 9:30 तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करना है उन्हें। 9:35 पर सडनली यू विल सी लाइक टॉम एंड जेरी, ही विल डिसअपीयर, राइट, कि अचानक से गायब हो गए। सो एंड ऑल्दो वी माइग्रेटेड टू बनारस फ्रॉम बिहार, बट बनारस बहुत जल्दी आपको संभाल लेता है अपने में। यू बिकम वन ऑफ द बनारसी वेरी फास्ट इफ यू आर अप फॉर इट। सो दैट अल्हड़पन ऑफ बनारस जो कहते हैं ना, विच कैन बी मिस्टेकन फॉर आलस ऑल्सो समटाइम्स, दैट लोग रिलैक्स्ड हैं एंड बहुत इजी ले रहे हैं लाइफ को, दैट हैपेंस फॉर पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग नॉर्मल व्हाइट कॉलर लाइफ एवरी डे। वो लोग भी वैसे ही जीते हैं। सरकारी नौकरी कोई कर रहा है, बाबू साहब उठेंगे अपना आराम से अखबार पढ़ेंगे, 4 लोग से बात करेंगे, बहुत इररेलेवेंट छोटे से टॉपिक पे, अरे यार उनके पड़ोसी को कुत्ता काट लिया, उस पर 1 घंटे डिस्कशन होगा, तब तक चाय वाय बच जाएगा। आधे घंटे डिस्कस करेंगे, फिर अपने मैडम से बोलेंगे अरे तैयार करिए लंच वगैरह निकलना है। ऑफिस करते करते घर ऑफिस पहुंचेंगे, पान वान खाएंगे रास्ते में, गाड़ी पार्क करेंगे, ड्राइवर से 4 बात करेंगे। सब कोई सबको जानता है बनारस में, सबसे Correct. अच्छी It's a चीज small, it's a पुरानी। small town हाँ kind of feel. करेक्ट। तब सो तक लंच अगर आप का कहीं भी टाइम जाओ आ तो जान जाएगा. लोगे। हाँ दैट्स व्हाई 3 of my favorite cities in the world are बनारस, जकार्ता एंड कोलकाता। तीनों में I ये would चीज was सेम है। going to ask you, does Kolkata make the cut? Because it's the same kind of vibe. I've grown up in Bengal. So तुम जैसे बोल रहे हो, this is वाह। exactly the same vibe of how a Bengali operates. Oh my God. हाँ And it's not government, it's everyone. बनारस है द होल अड्डा कल्चर दैट यू वुड हैव सीन ग्रोइंग अप इन बंगाल ना। Yeah. ये नॉर्थ कलकत्ता में सियालदा वगैरह साइड के जो लोग होते हैं, वो लोग उठेंगे, अगर कुमार शानू को इमेजिन करो, 20 साल का लड़का उठ रहा है, अपना रियाज किया, उठ के 4 लोग से बकवास करेगा, चाय वाय पिएगा, इधर उधर घूमेगा, अखबार पढ़ेगा, लुंगी पहन के नाच रहा है इधर उधर। दैट लिटरली इज होल ऑफ बनारस। एंड बनारस हैज अ मैसिव बंगाली इन्फ्लुएंस व्हिच आई Exactly, प्रोबब्ली yeah. कम टू लेटर, बट ये बहुत सेम डीएनए। एंड जकार्ता और इंडोनेशिया इज एग्जैक्टली लाइक दैट। सो व्हेन माय वाइफ फ्रॉम बंगाल शी मूव्ड हियर विथ मी, शी कुड फील द सिमिलैरिटीज कि यार यहाँ के लोग मतलब लाइफ को काफी सोच समझ के करते हैं। मतलब अगेन इट कुड कम अगेन एज अ लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेटिंग काइंड ऑफ अ थिंग, बट वैसा है नहीं। थिंग्स स्टिल मूव वेरी फास्ट, दीज सिटीज आर स्टिल डूइंग वेरी वेल। बनारस इज अट्रैक्टिंग मोर टूरिस्ट देन एनीवन इन द कंट्री राइट नाउ। 20 लाख लोग आ रहे हैं इस महीने। माय मॉम वाज टेलिंग मी कपल ऑफ डेज Oh बैक। my God. यस वी आर टॉकिंग अबाउट वेटिकन का जो वीकली ट्रैफिक है बनारस में, वो एक दिन में आने वाला है। Just imagine. Yeah, so I यस। have a very close friend who was in Banaras in the last week of December. So in my opinion, last week of December is not really like a specific festival for going to Banaras, right? I mean, राइट। people would do it in maybe like Delhi, where you can celebrate Christmas and you have Santa and all. She said the waiting queues were unbelievably huge. Of course, it's very well managed these days. She was very राइट। impressed actually. She said you get tokens in advance. It's pretty well managed. Even the ghats are well managed. She said it's fairly clean as well, which was like I was quite impressed. But she said, aisa bheed, oh my God. Yes, and that's the off season, And right? that's an Think off about that. season, precisely. Yeah. Yeah. So it will pick up. I think Banaras का जो tourism pick up करेगा over the next 2-3 months, it's going to be crazy in Banaras and Allahabad. Allahabad तो will explode into a different universe during the Sangam, during the Kumbh Mela. But उसका बहुत बड़ा residual crowd बनारस भी आता है, because this is the whole circuit, right? That हरिद्वार, बनारस and Allahabad. So एक डुबकी बनारस में लगेगी मकर संक्रांति के दिन, फिर उसके बाद शिवरात्रि आएगा, तब एक मेजर डुबकी वाला दिन होगा गंगा जी में। So it's going to be very lively, but irrespective of that, the tourism that has exploded, and I would not have believed it if I did not see it myself. Like I don't go to the touristy places because of the crowd and all. I try to avoid that. Mm-hmm. But my Nanaji was in town. I took him to the mandir, and I realized what was happening and how many people were turning up. It was unbelievable seeing that, and it has always been like that. But with better infra and all, Mm. we have been able to manage the crowds better. We have been able to attract more people, and I think this number will continue to grow with a lot of infra being in plan already. Yeah.
क्लीन अप भी हो रहा है, घाट भी काफी ठीक ठाक साफ हो गए। देखो बनारस के स्केल पे बहुत साफ करना संभव नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बनारस का भी तो अपना एक कैरेक्टर है ना। सो वो कैरेक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि बनारस का कैरेक्टर है कि साफ नहीं होना, बट बनारस का कैरेक्टर है बदलाव नहीं लाना अपने आप में। बनारस वैसा ही है जैसा हमेशा था। ये यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बनारस की जो हवा है वो बदलती नहीं है, बनारस के जो लोग हैं वो बदलते नहीं है। एंड जब भी मैं वापस जाता हूँ, एंड आई, गुड थिंग फॉर मी कि मैं काफी फ्रीक्वेंटली जाता हूँ बनारस, Okay. बट अ लॉट ऑफ पीपल हु इवन गो देयर लाइक वंस आफ्टर 4 और 5 years, वो लोग को भी लगता है यार कि अरे साला ऐसा ही था पहले भी, अभी भी वैसा ही है। नया बिल्डिंग बन गया बट असली के वही लोग हैं। This is like what Mark Twain said, no? Older than history, older than tradition, older than legend, and looks twice as old as all of these put together. So this is literally like that. The city is like that, has always been old like that, hasn't really changed. But of course, there are True, more like small developments that are happening, which are nice things. Like I heard there is a true. new, they are commissioning a new ropeway because the streets can't get broad. तो street के ऊपर से चीजें करना पड़ेगा. Right. Interesting. तो मैं Yeah, कब yeah. जाऊं बनारस विजिट करने के लिए? Should I wait for like 2 years and then go? I think in 2 years things would get even, more crowded. Ideal time is tomorrow. काल करे जो आज कर. तुरंत अभी बात करते ही भागो. मतलब you can take this call from the flight also or from the train. नहीं मेरे वैसे आई इट्स ओवर ड्यू फॉर मी. सो फॉर मी आई हैव टू डू अ लखनऊ बनारस Uh, ट्रिप एएसएपी. मेरा ओवर ड्यू है. एंड आई एम सो तुम्हारा तो नोट्स देख के ओनली आई न्यू कि मेरा फोमोस एट लाइक दिस लेवल इज गोना जस्ट गो अबव माय हेड. तो वेरी सून होने वाला है. Awesome, right, man, right. Pushpendra. Now you tell me. So I am going for the first time. I have to plan, and I'm going to do that. How are you going to take me through Banaras? Yeah. Tell us all your stories about Banaras, growing up, the tourist places, non-tourist places, food, of course, BHU. Oh my God, Buddhist influence, the mosques there, everything. So many So things, my much. God. So So much, much. and I will get into that. I think एक जो बहुत important point that you mentioned, right, what Mark Twain said, Mm. and it holds true to certain extent for Banaras, to quite an extent for Banaras. बट मैं वही सोच रहा था कि हम लोग मार्क ट्वेन की बात करते हैं जो बनारस शायद 1 या 2 बार आए होंगे। हमारे अपने बनारस हैज ऑल्सो बीन द सेंटर ऑफ पोएट्री एंड लिटरेचर, एज यू वुड नो, Yes. विश्वविद्यालय Mm. यूनिवर्सिटी प्रेस, विश्वविद्यालय प्रकाशन। सो जो बनारस को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है वो, मतलब मार्क ट्वेन से भी जिनको मैं ऊपर रखता हूँ, वो एक पोएट थे केदारनाथ सिंह करके हैं। उन्होंने बनारस के Mm-hmm. बारे में एग्जैक्टली इसी चीज पे बात किया था कि इस शहर में वसंत अचानक आ जाता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा और मड़वाडी की तरफ से एक धूल का बवंडर उठता है और इस पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है, ऐसा ही कुछ था। Oh my God, this sounds so lovely. मरवाड़ी एंड लहरतारा लाइक रियली ओल्ड प्लेसेस इन बनारस, राइट। और वो लिटरली इसी बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे बनारस अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, और वो चेंज नहीं हो रहा है, कि शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम भी धीरे धीरे होती है। मतलब ही रोट अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, आई डोंट रिमेम्बर द फुल थिंग। How beautiful, how या, beautiful. That sounds so nice. धीरे धीरे शाम होती है, हाँ, धीरे धीरे धूल उड़ता है. That's just like how you described. Now people are like हाँ, very shant and very एग्जैक्टली। maybe laid back or like धीरे धीरे. अच्छा, that's It can nice. give that vibe, right? Because Hmm. I truly believe that besides all the religious and commercial and all the angles that Banaras has become, to some certain extent, जो बनारस का Mm-hmm. कोर डीएनए है, जो फलसफा या फिलॉसफी है बनारस की, कि वो वही है कि अचल और सचल की बात है। बनारस अपने आप में एक एंटिटी है जो कि लिविंग एंड ब्रीदिंग है। और उन्हीं के पोयम से एक काफी इंपॉर्टेंट वो लाइन थी कि यहाँ कुछ गिरता भी नहीं है, यहाँ कुछ हिलता भी नहीं है, जो चीज जहाँ रखी थी वहीं पर है, गंगा जहाँ थी वहीं है, नाव वहीं बंधी है जहाँ पहले थी, और वहीं पे रखी हुई है तुलसीदास की खड़ाओ सैकड़ों बरस से, ऐसे करके कुछ था। तो My God, this is so beautiful. This is so beautiful. एंड Hmm. दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ बनारस की, जो बनारस का जो गूढ़ता है, जो बनारस का जो फिलोसफी है, वो यही है कि हम लोग नश्वर हैं, एंड दैट्स व्हाई द बनारस इज नॉट जस्ट द सिटी ऑफ लाइफ बट आल्सो सिटी ऑफ डेथ, राइट। कि नश्वर शरीर तो जाना ही है, हम लोग को मरना ही है, सब कुछ होना है, बट द होल स्पिरिचुअलिटी अराउंड इट, दैट इज गोइंग टू स्टे, एंड दैट्स व्हाट ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, आई थिंक लिविंग हिस्ट्री ऑफ बनारस इज ऑलरेडी मोर देन 5,000 ईयर्स। वो 5,000 साल में वो सारा कुछ बनारस के पत्थरों से लेके, सड़कों से लेके, दीवारों में बस और रम गया है, और बनारस चीखता है उसी आवाज में जो कि
पिछले 5,000 साल का हिस्ट्री है। सो अगर मैं आज घाट जाता हूँ तो मेरे कोई फर्क नहीं समझ में आता, एक्सेप्ट थोड़ा साफ है। वर्षे जब मैं बचपन Hmm. में मम्मी पापा जबरदस्ती ले जाके ठंड में डुबकी लगवाते थे पूजा में, 25 साल 26 साल में कुछ नहीं बदला है। और वही बनारस की ब्यूटी है कि सब कुछ बदलते हुए भी जिसने बनारस को देखा है उसको बदलाव नहीं दिखता है। Yeah, it stays. Holding on to a character is not easy. राइट। Beautiful, यार. I thought तुम कबीर बोलोगे कि किसका बोलोगे when you started saying कि from Banaras, because Kabir is also राइट from राइट। yeah. कबीर वगैरह बहुत ज्यादा गूढ़ हो जाते हैं, काफी डीप चले जाते हैं, बट मैं वो जबान जो मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है इज द यू नो मिडिएवल पोएट जो है, जो जब पोएट्री वाज फ्लरिशिंग इंडिया में इन द 70s एंड Hmm. 80s, रामधारी सिंह दिनकर वगैरह जो टाइम था, तो उस समय और इवन Oh, बिफोर दैट डायरेक्टली इंडिपेंडेंस स्कूल के बाद अभी नाम सुन रही हूँ मैं उनका. and pre-independence also, I think Banaras ka, of course, Banaras has been a center of literature for a very long time. And Yeah. even when you go to other cities, particularly for Hindus, Banaras is very important from education point of view. So नॉर्थ इंडिया में इट्स अ वेरी फनी एनेक्डोट, बट लोगों का जैसे मुंडन होता है, सर छिलवाए, बाल छिलते हैं, सब कुछ करते हैं, जनेऊ होता है यूपी Hmm. में, बिहार में, बंगाल में, इवन इन सम पार्ट्स Yeah. ऑफ उड़ीसा एंड ऑल्सो। लोगों को वेस्ट फेस करवाया जाता था, पश्चिम के साथ साइड मुंह करके बोलना होता था कि पढ़ने कहाँ जाओगे, तो बोलना होता था कि बनारस जाएंगे पढ़ने हम लोग। Oh, या तो really? इन बिहार हम लोग क्या सबका होता था मुंडन, हम लोग का मुंडन मतलब बनारस में हुआ शादी के दौरान, बट बहुत लोग का बचपन में होता था, तो वो लोग को बोला जाता था कि बनारस जाके पढ़ाई करनी है, सो दे हैव टू कॉल इट आउट कि काशी जाऊंगा पढ़ाई करने, बिकॉज अर्लियर द एजुकेशन वाज connected with the whole गुरुकुल काइंड ऑफ अ मॉडल, राइट। सो Yeah. Yeah. आपके जो स्टूडेंट वाला जो अपने जो आश्रम होते हैं बच्चों के, उसमें एक आश्रम जो होता था आपका बिफोर गृहस्थ आश्रम, वाज व्हेन यू एक्चुअली शेव योर हेड एंड यू गो टू अ गुरु एंड यू स्टे विथ हिम, यू लर्न विथ हिम, एजुकेशन भी आ रहा है साथ में, That's right. लर्निंग भी आ रही है। सो दैट Yeah. वाज Yeah. Yeah. इट्स क्वाइट प्रोमिनेंट इन हिंदू कल्चर एंड फिलोसफी इंक्लूडिंग बंगाल। बंगाल में भी बहुत लोग जो पढ़ाई की बात करते थे, ऑफ कोर्स मुंडन वगैरह वहां पे सब ब्राह्मण्स का होता था, बट दे यूज्ड टू से कि हम Correct. लोग बनारस Hmm. आके पढ़ाई करेंगे। एंड ऑफ कोर्स नालंदा वाज एग्जिस्टिंग एंड एवरीथिंग वाज एग्जिस्टिंग, बट बनारस वाज स्टिल द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग। So Pushpendra, as a background, I'm a Tamilian. And in our wedding rituals, there is this one ritual where, just before the garland exchange that happens, we have something called a Kashi Yatra. राइट। So what really happens in this is the suddenly हम्म। before the garland exchange, the groom gets, pre-wedding jitters and takes all his belongings and starts walking towards Kashi. ओ Belongings वाह। meaning, he'll have a Bhagavad Gita, slippers, walking stick, umbrella, and all these kind of things, and starts walking towards Kashi. And then piche piche, all the men on the bride side, father, brother, mama, all of them, they'll start running behind the groom and trying to convince him ki, vapas aa jao, vapas aa jao. Married life is going to be rocking. You guys will have a nice grihast and all that. And then the to be groom comes back, and then the Varmala राइट। exchange happens. So this is a fun ritual, during our shadiya. But yeah, we have like this Kashi related yatra kind of thing as well, which happens in our wedding. वाह। So I remember this just as you're telling your earlier stories. So वाह। Kashi yatra is a thing that happens even for a wedding. चलो मुंडन और राइट। your thread ceremony वगैरह तो अलग है, वो भी उसपे भी होता होगा. मतलब बनारस का इतना रोल है रूठने बनाने में भी शादियों में। Exactly. So Banaras has so many things. When you said this stuff, it struck me. It was very interesting, man. Fascinating. My God, already I'm like Banaras excited. And tum ye sab background de rahe ho, with such stories. I'm like all the more excited. Yes, yes. Batao. So you've spoken about beautiful, this amazing ठहराव वाला जो धीरे 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 वाले राइट। poems. So again, the reason why it just cropped in my mind was because, of course, we quote Mark Twain a lot of times. I've heard a lot of Hmm. my friends also quoting it. Of course, Mark Twain ने ऑब्जर्व किया and he took it to the rest of the world outside of World. India. But इंडिया के अंदर ही कितने कवियों ने, कितने राइटर्स ने बनारस पे इतना कुछ लिखा है, इतना बनारस की खूबसूरती से लेके, बनारस के लोगों के चरित्र से लेके, रख रखाव, व्यवहार, सब कुछ पे इतनी बातें की हैं बनारस के बारे में लोगों ने, मतलब बनारस इज वन ऑफ एंड द रीजन व्हाई आई थिंक व्हेन वी अर्लियर कनेक्टेड यू ऑलरेडी न्यू सो मच अबाउट बनारस, बिकॉज बनारस एक्चुअली बहुत पॉपुलर है Yeah, yeah, यार, yeah. इतना You कुछ read लिखा so गया much है। about the place. करेक्ट। Yeah. तो इसीलिए बनारस के बारे में
ऐसी चीजें बताना जो कि बहुत पॉपुलर नाउ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि पेरिस अगर कोई जाता है और पेरिस के बारे में बहुत कम चीजें होती है जो नहीं पता होती है, या न्यूयॉर्क के Yeah. बारे में। एंड दिस इज वन ऑफ माई पर्सनल एनेक्डोट्स कि जब मैं पहली बार न्यूयॉर्क में लैंड किया था तो मेरे को लगता था यार यार मैं आया हुआ हूँ 100%। इतनी मूवीज देख ली, इतने बुक्स Yeah. हैं जो कि हर चीज में न्यूयॉर्क में ही गॉडजिला आता है, एलियन आता है। तो आपको पता ही है कि हम मैनहट्टन में जाना ही है, फिफ्थ एवेन्यू यहाँ पे, उसके पीछे सेंट्रल पार्क है वो। यू मेक दैट स्टोरी राइट कि That's true. बनारस हैज द सेम थिंग बिकॉज इतना वेल कवर्ड है थ्रू लिटरेचर, थ्रू Mm. पोएट्री, थ्रू सिनेमा। आई मीन यू टॉक अबाउट रांझना, बट आई वाज आल्सो थिंकिंग बिफोर दैट in 90s I remember, and my dad is a massive Bollywood fan, so he took me to Mm-hmm. watch some of the shooting. I think घातक की shooting हो रही थी, अमरीश पुरी एंड सुनी sorry Sunny Deol. सनी देओल शूटिंग इन बनारस। Mm. देन सरकार राज की शूटिंग हुई थी आई थिंक 2002 या 3 में, इफ आई एम नॉट Mm-hmm. मिस्टेकन। सो बनारस हैज बीन देयर ऑन एंड ऑफ इन पॉप कल्चर, इन मेमोरीज, एंड दैट्स व्हाई बनारस का एक ऐसा खाका खींचना जो कि बहुत वेल नोन नहीं है becomes a bit of a challenging exercise, but then that is the real fun about Banaras, because Banaras, as I mentioned, is about the people who have lived there and who live there. उनकी कहानी बनारस के अंदर जो है, दैट इज द रियल बनारस, कि बनारस के लोगों Oh. की जिंदगी ही बनारस है। बनारस तो सिर्फ एक मतलब बिल्डिंग और गलियों का एक कॉम्बिनेशन है, बट वहाँ जो लोग रह रहे हैं, सेम जगह पे आपके डोम राजा का घाट है, उसके बगल में लास्ट दिल्ली, और वहां से थोड़ी दूर जब जाओगे तो ग्वालियर के राजा का घाट है, राइट। दैट इज what happened to Banaras when people migrated from rest of the country for different reasons, as center of art and culture and education and religion, but also commerce, right? Banaras is extremely popular for commercial reasons also, साड़ी से लेके फूड से लेके काफी चीजों को लेके तो Absolutely. yeah. So there's a massive Marwadi population also in Banaras, as you would know, and people probably do not know this. Banaras has a big Muslim population also. They're like 15-16% Muslims also. It has a massive, influence of Lucknowi culture or the Awadhi culture, which seeped into Banaras at the same time. So as much as we hear about the, bigger things in Banaras, there's an underbelly which is already undergoing going on in a very different way. लोग एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, and that's what makes Banaras a fascinating city. If I was not from Banaras, I would have still loved to talk to people who are from Banaras like what you're doing. मेरे को Yeah, लगता है I yeah. would have been very fascinated with Banaras even if I was not from there. So yeah, I think going back to your earlier point about अगर बनारस का एक छोटा सा वो करना होगा, क्या कहते हैं, TLDR वर्जन, तो काफी मुश्किल है। बनारस अपॉर्चुनिटी देता नहीं है। बट एक चीज जरूर कहूंगा कि it has been the most touristy place, one of the most touristy place for at least for thousands of years, right? I mean, pilgrims have flocked in from different parts Yeah. of the country, and जब Silk Road भी चलता था, so of course Bharat never fell directly on the Silk Road, but people who would come to Bengal on the Silk Road, a lot of people would come to Banaras from the Silk Road. They will deviate from their path and then they will join the rest of the gang again back to go to Turkey and all, to follow the Mm-hmm. Silk Road. So उस समय भी काफी लोग आते थे हजारों साल से। Chinese travelers used to come to Banaras again. Early Buddhism spread to China from Banaras, right? So for thousands of years, people have been coming here for deeper connection with the divinity. Sometimes becoming one with the their karma and nature. Liberation के लिए आते हैं लोग, अभी भी लोग आ रहे हैं, मतलब गोरे लोग आते हैं वहाँ पे हजार रीजन से। सब लोग को लगता है कि कुछ है वहाँ की हवा में। और जो इसका जो ब्रॉडर लार्जर देन लाइफ मिथ है कि दिस सिटी, दो कहानियां इसमें। एक तो ये है कि आइदर शिवा, लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ फाउंडेड द सिटी, सो व्हेन ही वोक अप Mm-hmm. he decided कि मेरी आंख जहाँ खुली है, इस शहर को ही मैं इनहेबिटेट करूंगा और दिस सिटी विल बिकम द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। एंड द सेकंड स्टोरी इज कि एक्चुअली बनारस इज ओल्डर देन लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, एंड व्हेन लॉर्ड शिवा वाज रिसाइडिंग इन कैलाश एंड ही वाज विजिटिंग एंड ही फाउंड दिस सिटी कि इतना खूबसूरत शहर कौन सा है, दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड दैट ही विल मूव टू बनारस। And again, I know a lot of mythology, a lot of beautiful mythology is here, but difficult to comment which one people follow more, and school of thought Whichever here. sounds more Yeah, beautiful, that's all. but there's so much charm about it. कि imagining that Adi जो देव है सबसे, he himself decided to make Banaras his abode, right? And Yeah. making Vishwanath Mandir one of the oldest temples in the world, not just India, right? तो काफी पुराना इससे, मतलब हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकली तो पुराना है ही, 5,000-6,000 साल की हिस्ट्री तो रिटर्न है। Yes. राजा लोग पता है सब कुछ, 6,000 साल पहले कौन रूल करता है सब कुछ पता है। बट बिसाइड्स दैट, इफ यू गो इनटू द मोर फैंटास्मेगोरिकल वर्ल्ड, बिल्कुल
वहां पे यू रियलाइज कि इसके बारे में myths तो go older than time itself. So that is what I think is the beginning of the charm of Banaras, the whole spiritual religious thing. And Lord Yeah. Shiva is not like other lords. He's like कि मूडी बंदे हैं जो कि बनारस का कैरेक्टर है कि आज मन किया तो करेंगे, आज कल मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे. No, So Banaras is just so full of stories from time immemorial. I mean, you true. have told two versions of how the city started. I read a third version, Mm-hmm. also around Lord Shiva only. कि Lord Shiva शादी के पहले he was chilling in Kailash, right? Up in the mountains chill कर रहे हैं. फिर शादी हो गई. फिर शादी होने के टाइम पे उन्होंने सोचा कि मैं कैसे I cannot continue like chilling in the mountains along with my wife, right? I have to find some more place where it is like I have to बसाओ my गृहस्थी kinds. तो फिर Yeah. वो पूरे वर्ल्ड घूमे. अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा. फिर he came to Varanasi and he said that, oh, this place looks like a gorgeous island. There is water all around. तो Mm-hmm. एक काम करता हूँ, मैं यहाँ बस जाता हूँ. This is going to be my place to live with my wife. यहाँ पे मेरा गृहस्थी बसेगा. तो then he basified in. That's when Kashi started, the Varanasi. Right. फिर इतने सारे फॉलोअर्स आए उनके कि ओ माय गॉड, दिस इज द प्लेस, मुझे शिवा भगवान से मिलना है वगैरह. So then there was a lot of food shortage in Varanasi की इतने लोग आ रहे हैं राइट मिलने के लिए, वो प्रे Right. करने के लिए, and all of that, what to do. And that's when you have the Annapurna, goddess who says कि Yeah. चलो, because it's for Shiva and there are so many devotees coming, I will give the boon to this particular city कि ये कभी भी will never have any food shortage. Everyone who comes to Varanasi will always be fed. No, What no, a absolutely. beautiful story, man. I'm like, मुझे ऐसी कहानियां कोई सुनाते रहो, मैं तो सुनती रहूंगी. It's not about religion. It's all about the story that goes behind the city or behind something. तो मुझे I got a third version, so I had to share it. No, no, this is actually this is the most accepted version, and this is the version that I was calling it the second version, right? कि अच्छा. he decided कि हाँ इंसान बनना है तो थोड़ा ये nomadic life से दूर जाने के लिए किसी Nomadic life से दूर अच्छे जाना, शहर not you जाना can't do होगा. my life, my rules. And Banaras, of course, and that's the funny part, right? Like when he came to Banaras, Banaras was already a flourishing city, right? And he decided कि ये तो काफी सुंदर जगह है, गंगा किनारे है, and of course, these have some scientific historical backing also, right? It's one of the most fertile land in the world, right? The Ganga Valley, starting the whole of UP, Bihar, and Bengal. Right now, of Mm-hmm. course, it's different, but 10,000 years back, agriculture flourished in these areas. That's why people Yeah, flock yeah. to the banks of these big rivers to live there because abundant khana, abundant agriculture, everything was there, right? So Shiva decided कि हाँ ये तो काफी सही जगह लग रही है. मेरे जो भक्त वगैरह भी उनके लिए भी खाने की कमी नहीं होगी. There's enough Mm. husbandry, there's enough agriculture. And about Manapurna temple thing, right? जो टेम्पल बना मान्नपूर्णा का वो बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के ही अंदर बनाया गया है कि अगर तुमने शिव का दर्शन किया और अन्नपूर्णा का दर्शन नहीं किया तो जर्नी कंप्लीट नहीं हुई तुम्हारी. Annapurna is Oh. feeding, so it's a whole circuit. So you do that main काशी विश्वनाथ का मंदिर. After that you have to go and visit the Nandi. So Nandi बैल का एक अलग छोटा सा टेम्पल है within काशी Mm-hmm. विश्वनाथ. And after that you have to come and go to the Annapurna Mandir. Then only your full darshan is complete. अच्छा. The Annapurna fed the bhakts when they started flocking to Banaras to see Shiva, right? और ये काफी ज्यादा मतलब respect garner किया for how big the city suddenly became, right? And that is manifesting right now. Banaras is becoming bigger. This imagine this happening probably 5,000 years back. If you, Yeah. from mythology point of view, if you remove the mythology and the temple would have opened and people would have started coming in, of course there would have been shortage of places or sometimes food, and still Banaras never suffered from any major drought or anything. That speaks a lot that whether something would have happened that made people believe even more in the whole folk and Yeah. the Yeah. religious part of it. Yeah. And is it true that Banaras has never flooded? No, that is not true. बनारस Oh. में काफी फ्लड आता है, Hmm. बट बनारस में फ्लड से डैमेज बहुत कम होता है बिकॉज बनारस का जो स्ट्रक्चर है, सो there is a very interesting point about this. It's quite Hmm. it's geographical and scientific in nature, but it also Hmm. explains why Banaras has its whole story. So Banaras में in the journey of Ganga from Gangotri till Ganga Sagar, गंगा Hmm. कहीं पे भी उत्तरायणी नहीं है. उत्तरायणी का मतलब है कि साउथ से नॉर्थ कहीं फ्लो नहीं करती है. गंगा स्टार्ट्स इन द Okay. नॉर्थ फ्रॉम हिमालयाज एंड इट कंटिन्यूज टू फ्लो साउथ.
It goes Hmm. to, hundreds of places, Haridwar, Kanpur, Allahabad, Banaras. Banaras में आके Ganga does a turn, and when you will see Google Map, you'll realize what I'm talking about. And Ganga becomes Uttarayani, so it flows from south to north. In the whole journey of 2,400 kilometers, गंगा कहीं भी नॉर्थ फ्लो नहीं कर रही है साउथ से। और या Fascinating. और Hmm. उत्तरायणी गंगा होने का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हुआ बाद में, जिसके कारण कि बनारस जब साउथ से नॉर्थ हुआ तो बनारस गंगा जी के लेफ्ट साइड में बसा, जो कि हो गया आपका वेस्ट। तो जब सनराइज होता है, और जिसके लिए बनारस नेशनल ज्योग्राफिक में कवर हुआ और दुनिया भर के मैगजीन में फोटो आती है घाट की, इसलिए क्योंकि बनारस घाट के मतलब गंगा जी के पश्चिमी तट पे है और पूरब से सूरज निकलता है, एंड दैट गेव ऑल द फोटोग्राफर्स द मैजिक दैट दे बीन कैप्चरिंग। एंड Oh सो God. सो उत्तरायणी गंगा है जिससे फ्लड का इम्पैक्ट कम होता है। सेकंड थिंग इज दैट कि अलोंग द घाट्स वी बिल्ट अ लॉट ऑफ सीमेंटेड स्ट्रक्चर, राइट, सीढ़ियां बनाई, सब कुछ बनाया, सो इरोजन Yeah. सॉइल का नहीं हो सकता ऑन द वेस्टर्न साइड वेयर बनारस इज Mm-hmm. सिचुएटेड, राइट। तो इसीलिए इम्पैक्ट काफी कम होता है बनारस में फ्लड का। बट गंगा जी तो गंगा जी हैं, वो भी मूडी हैं, जैसे शिव मूडी हैं तो गंगा जी मूडी है, वो अपना They're all घाट the तोड़ same देती है। family. हाँ, घाट तोड़ के आ जाती है ऊपर। मतलब मैंने तो बनास का जो मेन बीएचयू का गेट है वहां पे नाव चलती हुई देखी हुई है अपने लाइफ में। Really? हाँ, तो कमर तक पानी आ गया था, आई थिंक इन लेट 90s, 97 98 में। Oh, okay. भयानक बाढ़ आती है बनारस में। मैं जिस स्कूल में बचपन में पढ़ता था उसमें एक महीने का फ्लड वैकेशन होता था, उसमें गंगा जी आ जाती थी। इट वाज लाइक हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम द घाट। Oh सो my God. एक Flood महीने vacation. I've only heard of rainy days. एक महीने के लिए बंद होता था मेरा स्कूल, आई अरे रिमेम्बर। बाप रे. Oh, interesting. Okay. Yeah. So flood does Hmm. happen, but वही है, बनास का जो स्पिरिट है, people get over bad things very fast। बहुत कोलैबोरेटिव है शहर, लोगों का स्पिरिट एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, बहुत इंटरट्वाइंड है लोगों का लाइफ। तो पीपल जस्ट प्रोबेबली द मिजरी आउट ऑफ अ डिजास्टर लाइक दैट इज नॉट देयर। Okay. तो फिर Oh my उसके लिए बाढ़ बाढ़ God. नहीं आती होगी। पुष्पेंद्र, हमारा तो अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है यार, एंड आई एम लाइक फ्लाइंग समवेयर, इट्स सो ब्यूटीफुल. You are very very beautifully descriptive when you speak about the place, so it's amazing. Acha, why is Varanasi and Banaras spoken different? Is it just a name that was changed, or locally भी तुम लोग बनारस भी बोलते हो, वाराणसी भी बोलते हो? सो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो वाराणसी कम्स फ्रॉम वरुणा नसी रिवर, दैट पार्ट एवरीवन नोज। सो वाराणसी, Hmm. ऑल्दो इट साउंड्स लाइक अ मोर मॉडर्न नेम, is actually a more ancient name. Okay. And Banaras is the name that actually was given during the British era, or British Raj. Hmm. So it used to be called Benares, हाँ, Benaru, Benaras. yeah, right. Hmm. And that is also fascinating because इसका बहुत अच्छा historical context है that Banaras मगध के time पे, and when Patliputra was the capital of India during Guptas and Mauryas, तो बनारस Mm-hmm. was of course a very big center for the kingdom। बनारस से पटना 200 किलोमीटर ही है, बगल में ही है बिल्कुल, लिटरली। सो इट वाज लिटरली बॉर्डर, गंगा क्रॉस करके उस साइड यू गो टू बिहार, एंड इस साइड आ जाओगे तो यूपी आ जाता है, एंड बनारस स्टार्ट्स। सो बनारस Hmm. का जो किंगडम था, इट हैज बीन एग्जिस्टिंग लाइक दैट, बड़ा शहर था हमेशा से ही। ड्यूरिंग द मुगल टाइम ऑफ कोर्स इट बिकेम पार्ट ऑफ द ब्रॉडर मुगल एम्पायर लखनऊ, व्हेन मुगल्स मूव द किंगडम टू लखनऊ फ्रॉम दिल्ली। सो बनारस भी उसके अंडर ही आ गया। बट उस समय के जो बनारस के जो राजा साहब थे, उन्होंने आई थिंक 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में उन्होंने उसको स्पिन ऑफ कर दिया। बोला कि ब्रिटिश राज में ही क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट बनारस का राज, एंड इट मर्ज विद द आई थिंक बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया और समथिंग लाइक दैट। सो इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट किंगडम during that time. And during those days, I think the name Banaras kind of started picking up, that this is the kingdom of Banaras, or something like that, because काशी ही सब लोग जानते थे बनारस को, कि काशी जाना है। एज यू Yeah. मेंशनड, इवन इन तमिल कल्चर काशी सब लोग बोलते हैं। हम लोग Yeah, yeah, में yeah. काशी पढ़ रहे हैं, सारे संस्कृत के ग्रंथ वगैरह में काशी पढ़ रहे हैं। I think in बनारस the Vedas नाम था, also there it's the राइट। mention is Kashi. Yeah. Right, exactly. So I think Banaras pretty much picked up during the British era. I think British Raj ke time pe it picked up as Kingdom of Banaras, and Varanasi is more of a, how do I say, more scientific name because Banaras, Varuna और रसी नदी के बीच का जो एरिया है वही बनारस है, वही Mm-hmm. वाराणसी है। So that's how the names I think have caught up. But good thing is that Banaras में काशी is इंटरचेंजेबल विद ऑल अदर नेम्स। काशी अगर आप बोलोगे तो सब लोग उतना ही खुश होते हैं और उतना ही रिलेट करते हैं जितना आप कुछ भी बोलो, प्रॉब्ली मोर।
खासकर जो लोग Oh, बनारस के हैं उनको अच्छा लगता है काशी सुन के, बिकॉज काशी मीन्स आई थिंक लाइट, राइट, लुमिनोसिटी की, बहुत सालों से उज्जवल है। 100, oh. पूरा पोयम है बनारस में है ना कि 100 जग से न्यारी काशी, तो काशी इज लाइक वेरी, इट मेक्स पीपल वेरी हैप्पी, लोकल पीपल व्हेन दे हियर समवन आउटसाइडर से काशी। तो ज्यादातर तुम लोग लोकली काशी बुलाते हो? नहीं नहीं, तो बिकॉज बनारस कॉट अप ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, एंड यू विल रियलाइज हम्म। दैट इंडिया में काफी जगहों का नाम ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज एक्चुअली रिमेन्ड या दैट, लाइक बॉम्बे, कोलकाता, कलकत्ता हो गया। बनारस में बिकॉज बनारस आफ्टर अ वाइल इट बिकेम अ स्लैंगिश वर्ड और हिंदी में एब्जॉर्ब हो गया, तो किसी को पता ही नहीं चला कि ब्रिटिश टाइम का नाम है कि नहीं। तो लोग इसको बोलने लगे यार हिंदी में तो बना है रस से, इसलिए बनारस है। ओह, दैट इज आल्सो क्यूट। हाँ, कि रस से बना हुआ शहर है तो बनारस, तो लोगों ने इसको अपने बिल्कुल दिल में बसा लिया कि ऐसा नाम तो हम हम्म। लोग ही दे सकते थे, ब्रिटिश लोगों ने दिया भी हो या नहीं दिया हो, बट ये तो हम लोग का दिया हुआ नाम है। हाँ। और बनारस से लोग बनारसी हो गए, बनारसी एक अपने आप में एक अलग कल्चर हो गया, एक अलग रिलीजन ही बन गया बनारसी होना, तो फिर उसके बाद या तो नहीं छूटेगा। दैट इज अ नाइस वर्जन आल्सो, सो आई डोंट, हाँ, आई डोंट माइंड। Yeah, yeah. I think that's why Banaras, I think, is still the most, I think, popular name from what I understand. कि सब मतलब एटलीस्ट लोकल लोग तो हम लोग बनारस से काफी कनेक्ट कर पाते हैं एज अ, हम्म। क्योंकि हम लोग कोई बोलता है अरे बनारसी आ गया तो हम लोग लगता है हाँ हम लोग तो बनारसी हैं ही, कोई कोई भी हाँ। काशी का बंदा आ गया तो अजीब लगता है सुन के। तो फील्स आता है, फॉर बनारस यू गेट द फील्स, वेरी नाइस। एग्जैक्टली। बढ़िया है। बताओ, नाउ you've got to take me through the city, man. I'm like too much excited. राइट, सो आई थिंक बनारस का सबसे जो मेन मजा, जो अगेन दिस इज अ लोकल्स वर्जन, बनारस सबसे ज्यादा हम्म। मजा जो आता है वो आता है बनारस के स्टेशन पे उतर के। हाँ, बनारस में 5 या 6 रेलवे स्टेशन है। मैं उतना फ्लाइट वाली जनता को जानता नहीं हूँ ना, उतना उनको मोहब्बत कर पाता हूँ। जो लोग ट्रेन से बनारस आते हैं वही लोग बनारस आ रहे हैं असली में। ओके ओके। तो ट्रेन से आ रही हूँ मैं हाँ, फिर। ट्रेन से आने का एक अलग मजा है ऑफ कोर्स। दूर से आने वाले लोग तो कहीं ना कहीं से आएंगे, बट कहीं आसपास उतर के वहां से ट्रेन से आओ, ओके। यू कैन ब्रेक योर जर्नी। तो बनारस का जो मेन स्टेशन है, बनारस में काशी स्टेशन करके भी है। द हम्म। रीजन आई गॉट थिंकिंग अबाउट इट इज बिकॉज काशी के हम लोग बात कर रहे थे, बनारस में काशी स्टेशन भी है जो बिल्कुल हम्म। गंगा जी के किनारे है। उसके बगल में बहुत बड़ा ब्रिज है, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज इन इंडिया है, रेलवे ब्रिज। तो वो ब्रिज के बगल में काशी स्टेशन है। पर जो बनारस का मेन स्टेशन है उसको बनारस कैंट कहते हैं। वहाँ पे कैंटोनमेंट है, गवर्नमेंट हम्म। मतलब मिलिट्री की छावनी वगैरह है, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है, गुरखा ट्रेनिंग सेंटर करके। सो बनारस कैंट स्टेशन से आप उतरोगे तो दैट्स ऑलरेडी इन द ओल्डर पार्ट ऑफ द सिटी। वहां से, एंड दैट इज वेयर द रोपवे विल स्टार्ट फ्रॉम। कैंट ओ। स्टेशन से लेके वो हम्म। विश्वनाथ मंदिर का रोपवे बनेगा, दैट इज अराउंड 3 to 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। बट अगर अभी आपने उतर के वहाँ ऑटो या रिक्शा या कैब ले लिया तो आप 1 घंटे की बात कर रहे हो। The kind of traffic or the kind Only of that's crowd we're all. seeing. I mean, you would have heard those stories in Bangalore, but it's just Yes. real in Banaras that अगर मंदिर जाना है तो you have to, prepare yourself for that kind of traffic. कैंट से उतर के and I'll literally do a visual journey for you. कैंट से उतर Yes, के take a please. रिक्शा, आइडियली बनारस में तो रिक्शा चलता है सबसे अच्छा। Hmm. मैनुअल रिक्शा ले लिया और यू क्रॉस टू। Oh, you mean the cycle rickshaw kinds? हाँ, बनारस को घूमना है तो उसमें ही घूमना पड़ेगा, बिकॉज बनारस में हर चीज देखने लायक है, और अगर आप जल्दी में जाओगे तो कुछ भी देखने लायक नहीं है। Okay. और बनारस की सबसे अमेजिंग चीज है बनारस की जगहों के नाम। मतलब मेरे को Hmm. आज तक नहीं पता है कि क्यों बनारस की जगहों के नाम कैसे पड़ते थे, और कितने यूनिक और ऑकवर्ड और वेवर्ड नाम है बनारस में जगहों के, जो कि मतलब फनी भी साउंड करता है। तो यू विल क्रॉस अ प्लेस कॉल्ड सिगरा। सिगरा इज Hmm. लाइक द फर्स्ट बिग प्लेस दैट कम्स आफ्टर द रेलवे स्टेशन। उसका देयर इज अ प्लेस Hmm. कॉल्ड रथ यात्रा व्हिच इज मोर ऑब्वियस, वहां पे रथ यात्रा होती है ड्यूरिंग जगन्नाथ Hmm. Hmm. मंदिर एंड ऑल। Yeah. And then you come to the Mandir area, and there's a place called Guru Bagh, which of course is named because there's a Gurudwara there. After that Hmm. comes Gadaulia, which is literally the center of Banaras, जहाँ से मंदिर वगैरह का एरिया स्टार्ट होता है। Gadaulia is where all the businessmen and older wealth of Banaras resides. All Oh, कॉमर्शियल सेंटर है बनारस का। all the Havelis and all. हाँ, सो वहां पे आके आपको रिक्शे से उतरना पड़ेगा, बिकॉज उसके आगे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता। वहां से 1 किलोमीटर दूर दशाश्वमेध घाट है। Okay. Dashashmedh Ghat, most famous place in Banaras because of the oldest ghat, and दशाश्वमेध यज्ञ हुआ था वहां से ड्यूरिंग महाभारत। एंड वहीं से कनेक्टेड है आपका विश्वनाथ मंदिर, जो लोग देखने आते हैं सबसे ज्यादा। एंड वो Mm-hmm. जो पूरा एरिया है, दैट इज लिटरली व्हाट इज ड्राइविंग द क्रेजी टूरिज्म राइट नाउ, दशाश्वमेध Oh. मंदिर। अगर बनारस में आपको 1 घंटा मिलेगा और एक ही चीज करनी है और ट्रैफिक आप मैनेज करो, तो सिर्फ बनारस में विश्वनाथ मंदिर ही करना चाहिए। एवरीथिंग Okay. एल्स इज अमेजिंग, बट वही है कि वन विश इफ यू हैड इन योर लाइफ और एक ही पूरा हो सकता था तो विश्वनाथ मंदिर इज दैट थिंग।
Oh, really? You Yeah, really feel so? I feel so, and I have not been there myself in the last 20 years except once when I took my Nanaji, but I know why it is important. I know Hmm. why it has been important for a long time. इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है इंक्लूडिंग नेपाल में पशुपतिनाथ. वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रॉब्ली द ओल्डेस्ट वन इज एक्चुअली काशी विश्वनाथ. Mm-hmm. एंड अगेन हम लोग बनारस में तो हम लोग शायद उस चीज के महत्व को या उस चीज के इम्पोर्टेंस को उतना रियलाइज नहीं करते थे बचपन में. But then I realized, and you mentioned about Tamil people's culture, right? There's a massive Tambram population also in Banaras who came here Mm-hmm. generations ago, and they are kind of in the priestly zone in Banaras culture and all, and they are connected with the big Brahmins of Varanasi in the puja circuit and everything. So लोग तब से आ रहे थे even before people like me woke up to the reality कि बनारस कितना important था culture में और religion में. एंड वो मंदिर ही बनारस को मतलब रिप्रेजेंट करता है अगर एक चीज को डिफाइन रिप्रेजेंट करता करना है. हो. हाँ, कि अगर हम्म. आईफिल टावर करेगा पेरिस को रिप्रेजेंट तो बनारस को विश्वनाथ मंदिर ही रिप्रेजेंट करता है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस व्हिच आर इक्वली इंपॉर्टेंट बट वन आइडेंटिटी ऑफ बनारस इज विश्वनाथ मंदिर एंड विदाउट दैट आई थिंक बनारस इज अधूरा. क्योंकि अगर आप शिव का शहर बोल रहे हो शिव की नगरी काशी है तो शिव का अबोध काशी विश्वनाथ है. That's true. That's true. एक बात बताओ. So if I'm going to visit Banaras, the main reason behind going there is most likely going to be visiting the Kashi Vishwanath Mandir, right? ट्रू. So tell me something. How do I plan that? What is the temple? So we have all obviously seen the whole 2024, May the द whole मॉडर्नाइजेशन. modernization, Ram Lalla and all that happened. You know, the whole temple, everything, the darshan getting way more organized, etc. But what is the temple like? You know, what will you या experience when you visit the Kashi Vishwanath Mandir? या कुछ उसके बारे में बताओ. Right. So unfortunately now in 2025, Kashi Vishwanath का दर्शन करना itself can take you half a day. Hmm. Unless you're getting a VIP entry, which I'm hearing is also getting very restricted because in India VIP बनना बहुत easy, बहुत लोग के contacts हो जाते हैं, so VIP line भी उतनी लंबी होने लगी है, what I'm hearing. Hmm. Uh, but what people are generally experiencing is 4 to 5 hours of queue. It's almost like वैष्णो देवी का Wow. चढ़ाई करना है. Yes, yes. So the crowd is immense. I would rather suggest to people to come in off season when there's no religious festival happening, nothing to do with Shiva is happening, nothing to do with any major Hindu festival is happening. Come during that time. It will be leaner period, slightly less hassle. You can probably do the whole गंगा जी से जल लेके डालने वाला काम in probably 2 to 3 hours. But even दो तीन घंटा तब Mm-hmm. भी लगेगा. But that 2 3 घंटा is not that painful because I've myself stood Okay. in the queue in 2021. I realized that 2 घंटा निकल जाता है आराम से. So from the station, I would always suggest people to stay in the city center and not stay in those fancy hotels like Taj and all because they're away from the city. बनारस का पूरा Mm-hmm. एक्सपीरियंस लेने के लिए आइडियली यू शुड स्टे नियर अस्सी घाट जहाँ पे यू गेट Okay. द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. यू सी द रस्टिकनेस ऑफ बनारस but at the same time you'll meet amazing artists from BHU, you'll meet foreigners also, you'll meet different kind of souls, you'll feel people who are hippies also yoga करने आए हुए लोग Oh. प्राग से. I met someone very early in my life was from Czech and that time it used to be Czechoslovakia, so you can imagine how Hmm. old back that was, how many years back that was. So And at that time they've come from there to yeah, Varanasi, it was very Hindi. popular in the East Europeans. The hippie Hmm. culture had a Yeah. certain root in बनारस and बनारस में अंदर के गलियों में you will see paintings of Jimi Hendrix, John Lennon. मतलब अंदर गलियों में अलग लेवल पे आर्ट मिल सकता है. यहाँ पे Oh. द्रुपद मेला होता है जहाँ पे people like जाकिर हुसैन and बिस्मिल्लाह खान used to come and play for free for normal crowd. So काफी चीजों में बनारस का एक अलग ही लहजा है, अलग ही वो है तमीजदारी है बनारस की. और जो चीजें बाहर के लिए बहुत वाव है बनारस के लिए काफी वो रन ऑफ द मिल हो जाता है कभी कभी. Mm-hmm. So I would suggest people to stay near Assi Ghat. It will expose you to a mix of amazing cultures and phenomena that are happening in Banaras. And from there, go to the Kashmir Ghat using the boat. And boat पे उतर के वहाँ पे you take a dip if you want to. Otherwise, don't take a dip. Take the Ganga Jal from there, and then you go and queue into the temple. Mm-hmm. That would be the ideal thing. But don't stay near Okay. the Kashmir Ghat. It's extremely congested. Okay. Okay. Uh, that is the first and most important thing that whether it is a tourist, whether it is a local, my mom still goes there once a week, right? I mean, locals भी जाते हैं. It's equally important to everyone. Oh. It's not a tourist only place. सब लोग के लिए उतना ही महत्व रखता है और सब लोग वहाँ जाते हैं. And once you go to Vishwanath Mandir, and of course
immediately before going there, you have to take the bath in Ganga Nadi, and then you get exposed to the first view of the ghats, right? And once you go down the stairs on the Shashmed Ghat and you look left and right, you realize कि जहां तक आपकी नजर जा रही है, लोग और घाट और गंगा जी दिख रही हैं, कुछ नहीं दिखता है. And the famous images on internet and on in media that you would have seen over years, वो सामने आ जाता है आपकी आंखों के, कि सामने नाव लगी हुई है, लाइन से लोग डुबकी ले रहे हैं पानी में, और राइट साइड में लोग ही लोग, घाट ही घाट, सीढ़ियां ही सीढ़ियां, और एक के बाद एक स्ट्रक्चर अलग अलग है, हर घाट का स्ट्रक्चर अलग है, डिजाइन अलग है, अलग डोनेटर ने पैसा देके बनवाया, अलग लोगों का कल्चर था, अलग टाइप का आपको रख रखाव लोगों का मिल जाएगा, अलग टाइप का हाल चाल व्यवहार मिल जाएगा आपको, बट हर चीज एकदम गुंजायमान है, लोगों की आवाज आ रही है, वेरी लाइवली. वंस यू गो टू द घाट यू रियलाइज की जो घाट को लोग इतना ओवर हाइप करते हैं, वो क्यों करते हैं? बिकॉज घाट पे जाके you actually, even if you are literally 500 meters away from Vishnath Mandir, you become something else, you become someone else, because you are seeing so much. It becomes way too magnanimous. बनारस का जो मैग्नानिमिटी है वो आपके सामने आ जाता है कि क्यों बनारस बनारस है. वो मंदिर में आपको नहीं समझ में आया, मंदिर इज द रिलीजियस एंड द कल्चरल पार्ट ऑफ इट, बट आपको जो स्पिरिचुअलिटी का बनारस से जो कनेक्शन फील होगा वो घाट से ही फील होगा. और वो लोकल्स के लिए भी ट्रू है. मतलब मैं अभी भी जाता हूँ तो घाट जाता ही जाता हूँ, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हजारों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं. तो घाट पे आप गए, घाट पे यू बिकम वन विद एवरीथिंग. यू डू द बोट राइड. आई थिंक इट्स अ मस्ट do thing for any touristy checklist, but also for people who are not looking only for touristy things. It's still a great experience. I think completely that I would completely vouch for it कि ये तो करना ही चाहिए. Oh, I think wow. बनारस में boat ride is a different experience, and during winters it becomes even better. फॉग रहेगा, फॉग के सामने गंगा जी का हल्का हल्का पानी दिखता है, अदर साइड यू हैव द होल बीच, रेत का बीच है उल्टे साइड पे. इन द डिस्टेंस यू कैन सी द रामनगर का फोर्ट, जो बनारस के राजा का फोर्ट था, और इधर के साइड Mm-hmm. आपको सारा घाट दिखेगा एंड एवरीथिंग. One place that has a lot of nostalgic value for me, but over the years it has become extremely popular, is the Assi Ghat. I think it's one of the Mm-hmm. most popular places in Banaras now. Earlier, it used to be the young generation's hangout place. Very few places where people could go on dates and everything. It had good pizzerias. पहले Oh, जापानीज शॉप देखा था जहाँ पे रामेन मिलता था. मेरा रामेन क्या होता है, राम जी के नाम से कनेक्टेड लग नहीं रहा. Raman to Ram, I would never have thought. In Sanskrit, right? Sanskrit, if you talk about Ram, Ramen, Ramabhyam, so it's actually in Sanskrit, there's a word for Mm. Ramen, right? So it could be mistaken for that, Banaras being Banaras, right? But Good one, good one. but there are good pizzerias. अभी तो काफी मॉडर्न हो गया है, पूरा कमर्शियल हो गया है. बट अस्सी घाट इज अ मस्ट विजिट प्लेस. इज द 80th घाट ऑफ कोर्स, एज यू वुड इमेजिन. बनारस में टोटल Oh, 80 because of the Assi घाट. thing. Okay, okay, okay. Yeah, another one of the literal places in Banaras. 80 है तो क्या नाम रखे, 80 रख देते हैं. But the Imli wala did not fall No, in the that did not literal add up. thing. And I'm telling you, 99% places would not have any Would meaning or not. real meaning. Like How many ghats are there in? 83, 84 now. So we have built more ghats over the years Okay, because okay. there's enough tourism and enough place Hmm. also. There's a whole stretch that has not been made into proper घाट, जहाँ बन सकता है घाट. वो सुंदर Okay. जगह है, अच्छा वाइब है, वहाँ पे बना रहे हैं लोग. 80 ओरिजिनल होते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम राजघाट, विच इज द वन वेयर काशी स्टेशन वाज सिचुएटेड. उसके आसपास पहला घाट है. एंड द लास्ट वन यूज्ड टू बी काशी, सॉरी 80. एंड Hmm. इफ यू विल डू अ बोट ट्रिप, वो तुम्हें पूरा घुमाता है 80 के 80 घाट. They Oh, can choose to take the long beautiful. one. Hmm. And once you're doing that, I think two most important places besides the Shashmed Ghat, which we discussed, and Assi Ghat, is the Manikarnika Ghat and the Harishchand Ghat. Okay. Again, extremely popular, both the places. Hmm. I think very well documented and covered across multiple medias and channels. But uske बावजूद, once you see it first time, right, in your life, it can still kind of overwhelm you. मैं हर बार जाता हूँ, सरप्राइजिंगली आई डू द बोट राइड हर बार, मतलब But it's such a beautiful लगभग. experience. I generally like boat rides. Hmm. And if you go at night and when you see the flames at Manikarnika particularly, right, it can really churn your stomach sometimes, but it can also make you numb to certain extent. It Hmm. can be very, very all-encompassing, overwhelming kind of experience जहाँ पे Hmm. you don't want to do anything or say anything. You just want to look at it, and probably Yeah. just after a minute or so, you want to just turn away and not look back again, because it can be, very overwhelming. Very Yeah. overwhelming, I would say, because it's a experience that we are all scared of kinds, right? So when you see Uh, so much of it in front, and I've heard that it's not like कभी break मिलेगा, तुम back to back, you will be seeing pyres burning and Correct, correct. the fumes, and how वहाँ पे लोग उसको BAU समझते हैं. It's like business as usual. It's not हाँ, something. exactly. It's रोज और हम के साथ, but it's very macabre, right? If you look at it, it mm, feels quite unique. मतलब बहुत
दुनिया में कम जगह होंगी जहाँ यू विल सी दिस, राइट? एंड ऑफ कोर्स द होल लेजेंड एसोसिएटेड विद कि यहाँ पे इटर्नल फायर है बिकॉज शिवा लिट इट, राइट, विद हिज ओन त्रिशूल, की ये फायर कभी बंद नहीं होगा प्लीज बिकॉज टेल द स्टोरी. मुझे ये स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग लगा व्हेन आई फर्स्ट रेड अबाउट द होल इटर्नल फायर एंड द डोम राजा एंड शिवा एंड द होल थिंग. राइट। सो काफी सारे मिथ्स है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मणिकर्णिका है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड वन है जहां तक मेरे को पता है, कि Hmm. शिवा एंड पार्वती देवर विजिटिंग काशी, एंड वो Hmm. लोग अपना ऊपर ऊपर से हवा में जा रहे थे, Hmm. एंड again I think there are multiple stories about how Shiva and Parvati used to travel to this earthly places, right, from their Mhm. heavenly abode. They would come down to earth to look after their bhakts and all. तो ऐसे ही बनास के ऊपर से वो लोग जाते हैं, एंड पार्वती का मणि और इयरिंग मणिकर्णिका फेल इनटू अ वेल एट द घाट. Hmm. शिवा ने उसको खोजने के लिए अपेरेंटली बहुत एफर्ट लगाया, एंड देन ही एक्चुअली लिट अप द होल प्लेस यूजिंग हिज त्रिशूल, और जिसके कारण वो फिर फायर अभी तक चल रहा है. उसका Okay. बर्निंग से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं हुआ, Hmm. बिकॉज Hmm. सती का जब वो गिरा, मतलब एक्चुअली पार्वती जी का नहीं, सती जी का गिरा था Hmm. मणिकर्णिका, वहां पे डेथ कैसे स्टार्ट हुआ इसका स्टोरी नहीं है, बट शिवा गॉट एंग्री. वहां पे ये पता है सबको कि उनका मणि गिरा और मिला नहीं, ये काफी उनको बुरा लगा. एंड शिवा बिंग शिवा अ बिट टेम्परामेंटल, एज यू नो, Yeah. त्रिशूल काफी जल्दी यूज कर लेते थे वो, राइट? सो स्टार्ट, एंड जब वो काम डाउन हुए तो शायद उन्होंने बोला कि अगर कोई भी यहाँ पे आएगा, तो अगर यहाँ पे उसकी लाश जलेगी तो उसको मोक्ष मिलेगा फ्यूचर में. Hmm. ये उन्होंने अपने हमेशा की तरह गुस्से को ठंडा करके पॉजिटिव स्पिन दे दिया कहानी को. Yeah, the later, हाँ, after you calm down, when you want to make up for what करेक्ट. damage you caused. उन्होंने डैमेज कर दिया, आग वग लग गई, और उन्होंने बोला मेरे मतलब त्रिशूल से आग निकली है तो ये बुझ तो नहीं सकती है, बट इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा कि जो भी मरने के बाद यहाँ आके जलेगा उसको मोक्ष मिलेगा, सैल्वेशन मिलेगा. और उस दिन से अभी तक का ये कहानी चल ही रहा है कि अगर गंगा जी के पश्चिमी तट पे मरोगे, मणिकर्णिका में जलोगे, तो मोक्ष मिलता है, और राइट साइड मरोगे तो स्टोन बन के पैदा होना पड़ता है, निर्जीव. तो दैट स्टोरी स्टिल गोज इन बनारस वेरी रेगुलरली. So that's the story of Manikarnika. Mm-hmm. And the other one, which is the bigger one, is the Harishan Ghat. थोड़ा बड़ा घाट है Mm-hmm. in terms of size and scale. Again, very unique stories कि राजा हरिश्चंद्र को कर्ज दे दिया विश्वामित्र ने. He lost all his wealth and all, and he started working for Raja Dome. And this is a story that I think all of us have read in Panchtantra also as one of the lessons कि life में जब adversity आए, so you cannot change your character and all those things, right? And then Mm-hmm. जब अपने बच्चे का डेथ हो जाता है, and when the testing times become like really excruciating, still he asks his wife कि जब तक मेरे को इसको जलाने का पैसा नहीं दोगी, क्योंकि मेरे बॉस को I have to pay back, तब तक मैं अपने बेटे की लाश पे नहीं जलाऊंगा. और मतलब दिस कहानी गॉट एच्ड सो मच इनटू आवर ओन माइंड्स कि Yeah. मतलब हम लोग तो बचपन ही सुन रहे हैं कि व्हेन ही वाज रिड्यूस्ड टू डेस्टिट्यूशन एंड ही वाज वर्किंग एज अ क्रीमेशन ग्राउंड वर्कर, लाश जलाते थे डोम राजा के लिए. ही वाज वेरी रिच, एंड दैट डोम राजा Mm. आल्सो वाज हैड बिकम अनटचेबल बिकॉज ऑफ शिवा. शिवा गिव दैट कर्स कि तुम लोग Yeah. जलाने का काम करोगे. Yeah. तो जब अपना ही बेटे को जलाने का टाइम आया, एंड ही कुड नॉट डू इट अनलेस उनकी वाइफ जो थी शैव्या, शी पेड द फीस. एंड देन विश्वामित्र केम बैक एंड एवरीवन केम एंड सेड कि यार ये तो अलग लेवल पे चला गया है बंदा, मतलब बिल्कुल this kind of dignity, this kind of respect and honesty is a virtue that will probably go on for years. So as old as Banaras is, this story has been there for eons. और लोग आज भी Yeah. इसके बारे में बात करते हैं. और हरिश्चंद्र घाट, सेकंड घाट जहाँ पे लाशें जल रही हैं. So so Harishchandra Ghat is the ghat where you will have the Dom Raja, or you'll have the No, Dom Harishchandra Raja Ghat in is the the. Dome Raja one. Manikarnika was the different Oh. one. Manikarnika Okay. काफी पुराना है, but Manikarnika is the one which is very closer to the Assi Ghat, Okay. and walkable है. So yeah, I think these are the Oh. two must visit places on Must the visit Ganga Ghat. places. Yeah, I think if you're doing the boat ride, you should do it. So when you are in this Harishchandra Ghat, I've heard that you can actually see the current Dom Raja just walking हाँ, तो around उनका there and all खानदान that. है. हाँ. तो Hmm. उनका खानदान है, बच्चे जनरेशन बाय जनरेशन कर रहे हैं उनका काम. अनफॉर्चुनेटली ऑल दिस ब्यूटीफुल मिथ एंड स्टोरीज गॉट कन्वर्टेड इनटू a caste based practice जो अभी भी चल ही रहा है, Yeah. Yeah. right? So Yeah. it got transferred into the monster that it was not supposed to become. But sometimes you can see the Domraj on the ghat. उसकी family अभी भी कर रही है ये काम. It became their kind of their job, became their identity in a way which is very Mm. bad, but somehow that's Yeah. still happening. But Banaras में आके you don't feel that segregation, or I think. I have seen a YouTube documentary on the Dom Raja. Mm-hmm. The story that, just for our listeners, the story that, or rather the legend that goes is that
the Dome Raja kind of tried to steal the Manikarnika's earring, जो सती का जो गिर गया था, the one that Pushpendra just mentioned, and he either stole it or picked it or something, and Lord Shiva got really angry and he put a curse saying that अब से you are the most untouchable person in that can ever exist. You will be the lowest ranked हाँ. person. Correct. That is the myth that I've also heard. That's the legend. हाँ. So then he really apologized, saying, "No, I was not trying to steal it. मैंने बस उठाया." And by the time Lord Shiva calmed down and he said, "ठीक है, okay, चलो." That sounds like a very Banarsi thing to say. नहीं, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए देख रहा था. मैं बस वो देख रहा था earring को, and so then Shiva calmed down and he said, "ठीक है, okay." The lowest rank वाला बात मैंने बोल दिया. I can't take that back. But what I can do is this eternal flame जो मेरा through the Trishul जो जल रहा है, you will be the owner of this flame. Correct. Which means any person who is coming to Varanasi for their last rites, you will be giving them moksha because वो flame के owner तुम हो. तो तुम वो उस flame से उनको they will get their moksha. So you are the owner of giving people moksha kind of thing. That's true. That's pretty much how we have also heard from our childhood कि यही कहानी होता है. और डोम What a story, man. यही कहानी, यही बहुत important चीज है. मतलब this is the beauty of the story कि the person who was doomed to become the lowest part of the social pyramid, somehow he is not responsible for making sure that other people go to moksha and get salvation, right? So that is the eternal thing. That is the beauty of Shiva, that kind of encapsulates what Banaras is all about, right? The extremes of everything, but all going together at the same time, right? I think that's what Banaras very unique in a lot of ways, right? Yeah. When you're doing Ghat, you have to do these things. So there are 4 really good Ghats that one must. Yeah. There are actually 5. There's one more, which is the more recent one, the one that Narendra Modi recently inaugurated, right? Oh, the Narendra Modi Ghat. Yeah, the Modi Ghat. It's a thing of beauty. बहुत ही wide, बड़ा, खूबसूरत, very well architecturally made नया घाट है. Not part of the original 80, of course. It's a good one. Very touristy, very pretty to take pictures and all. Very social media worthy. Oh, my Instagram has to happen there. Exactly. So Gen Z's ka favorite Modi Ghat. So that's the other one that you should definitely, I think, do. And anyways, if you take the boat, he will himself pitch it that ये तो आप कर लो मैडम, नया है. उनको ही मालूम है कि इंस्टाग्राम के लिए क्या चाहिए. हाँ, वो फोटो भी ले लेगा, बोलेगा आईफोन को उल्टा करके लोगे तो अच्छा आएगा. अलग level pro. These guys are tourist guides, man. They are not just boat. They are hanging out with the Chinese, Japanese and the Eastern Europeans. उनको पता है कि क्या चल रहा है दुनिया में. 5 लैंग्वेज जानता है वो, सिंपल सा बोट वाला. Amazing. I love it. तो तुमको आइडली गाइड की जरूरत ही नहीं है. ये लोग तुमको पूरा दिखा देंगे, स्टोरी सुना देंगे, बैकग्राउंड वगैरह सब दे देंगे. Banaras attracts massive expat foreigner crowd, right? Foreigner tourists. Even before the new resurgence that has happened, हम लोग तो बचपन से ही गोरे लोग को देख रहे हैं कि बनारस में आते रहते हैं. So यूपी में after Agra, maximum foreigners used to come to Banaras to visit. And in the recent years, I have heard that it's in the top 3. So maximum people come to Delhi, but उसके बाद Agra has become number 4 or 5, and Banaras attracts more foreign tourists than Agra also these days. Fascinating. Wow. And of course, the whole story around yoga, meditation, Ganges River in this way, right? So that's why, I mean, it's weird, right, that you'll find a proper Japanese restaurant in middle of nowhere in Banaras, right? Or you'll find proper pizzerias which are making wood-fried pizzas in 2005. So, wow! So गोरे लोग आए वहाँ पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं. So, and then once you move out of the Ghats, Banaras में एक जो बहुत यूनिक चीज है वो है भारत माता का मंदिर, which a lot of people do not know about. Very few places in India might have a temple dedicated to a country. Yeah, what do you do in the temple? Like, what do you see in the temple? So it basically जो हम लोग भारत माँ का जो concept कहते हैं ना कि in India we associate a lot of feminine figure to deities and all, right? गंगा को माँ, भारत को माँ कहना, तो वहाँ भारत माता का एक kind of humanification है और उसको वर्शिप करते हैं लोग. सफेद रंग का बड़ा सुंदर सा मंदिर है. काशी विद्यापीठ जो कि यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लोग जाते थे पढ़ने, उसके बगल में ही सिचुएटेड है. सरप्राइजिंगली नॉट वेरी पॉपुलर. आई थॉट कि इसके अराउंड काफी अच्छा एक टूरिस्टी एंगल भी बनाया जा सकता है, राइट? कंसिडरिंग दैट we are becoming more and more proud as a nation, we are taking a lot of positivity out of our patriotism and all. I think good opportunity to create a story around this कि very few places, I'm not sure और भी कहीं होगा, I'm very sure
कहीं और हो सकता है, बट एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ जहाँ पे भारत माता का मंदिर हो, एंड इट्स अ सेमी टूरिस्टी प्लेस, स्टिल पीपल गो देयर, but Mm-hmm. not as popular as the big temples of Banaras. And Mm-hmm. Banaras again, when you talk about big temples of Banaras, बनारस में इतने ज्यादा टेम्पल्स है, 16 करोड़ बोलते हैं ना लोग देवी देवता है, सबका एक टेम्पल बनारस में होगा। मतलब when you go from my house to the घाट, right, I can count at least 30-40 temples, छोटा बड़ा मिला के। 2-3 किलोमीटर के अंदर 30-40 मंदिर हैं, छोटे बड़े। और बड़े वाले मंदिर की बात करें तो आई थिंक one temple that I have visited the most is called the Sankat Mochan. It's dedicated to Mm-hmm. Hanuman ji. My Mm-hmm. dad visited that temple for close to 25 years every Tuesday till he Wow. retired. So I do come from a religious family. Mm-hmm. I think that kind of goes with the whole Banaras vibe as well. True. Mm. And Mm. a lot of people just don't go to temple for religious vibes. They just go there because अच्छा लगता है वहाँ। Socializing, वो भी हो सकता है, positive energy, like what you're हाँ, saying, right? true. You're 500 meters away from the ghat, but there is an energy that comes. This is something that even actually I have heard many of my friends saying as well. There was one who, like I said, who visited recently. She said she's not religious. She went with Yeah, her family. She said कुछ तो है वहां पे, there is a spiritual angle to it. I'm not true. talking about religion at all. You know, the mandir ke ghanti will be ringing, then you'll Yeah, have people chanting, then of course you'll have the fire, either it's in aarti form or it's in the form of a pyre or something. वो true. सब देख के कुछ तो एक होता है, there is an energy that the place has, and most temples have that. Temples can talk of anything, any religious True. place. I think the vibrations. I think your friend got it right. I think कुछ vibrations है, and that could be one of the reasons, right? Because बगल में गंगा जी है तो water का एक sound होता है। Most calming. Uh, so I think वो सारा sound मिला के, and that probably could be the reason why classical music in Banaras became so big, right? And Banaras is one of the oldest घरानास for Hindustani classical music, because बनारस में एक sound तो है ही, शहर में एक buzz है। And of Hmm. course, in the last few years, with the whole hyper growth and everything, thoda sa noise of traffic and all has taken over. But I distinctly remember when I used to live in the older part of Banaras. Banaras में एक particular frequency का एक noise है. It mostly comes from the temples and the chantings and probably sound of Ganga ji and everything. But वो मिलके एक particular frequency पे एक resonance create होता है बनारस में. And I am an atheist myself, but I truly vouch for what your friend said कि एक sound है, एक particular frequency का एक sound create होता है, which is quite calming. It is quite enlightening to certain extent. But yeah, Wow. anyways, let me give you a few more good places which people should definitely visit. I think, Lots of places, yeah. lots of places. Yes, tell me. So Sankat Mochan has to be there. I think again one of the old temples has a very fascinating story about how हनुमान जी के ऊपर सिंदूर डाल दिया था खुद से उन्होंने. Please, Bolo, please. I love stories. Right. So if you look at mythology, Hanumanji was actually from southern part of India, right? Northern Karnataka, Kishkinda and all was Hmm. besides the Vindhya and all. But somehow in eastern UP and Bihar, Hanumanji is probably the most worshipped god, right? And the story goes, and I do not remember the exact details, but goes कि Hanumanji used to think that सीता जी हमेशा मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं, हाँ, तो किसी तो बात करते हैं, तो बोलते हैं अरे क्योंकि वो राम जी को बहुत प्यार करती है ना, तो इसलिए वो ऑरेंज सिंदूर लगाती हैं, हाँ। Hmm. हनुमान जी जैसे ही सुनते बोलते अच्छा जो राम जी को बहुत प्यार करते हैं वो बहुत सिंदूर लगाते हैं, देन ही गोज ही गेट्स अ होल ड्रम ऑफ सिंदूर एंड ही पोर्स इट ओवर हिम, तो पूरे बॉडी Oh, उनका ऑरेंज sweet. में हो जाता है कि मैं भी तो राम जी को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ना, दैट इज द स्टोरी, नाउ आई रिमेम्बर। और इसीलिए जो वहां पे जो Such an endearing story. एंड व्हेन यू लुक एट हिज मूर्ति इन संकट मोचन मंदिर, इट इज इन डार्क ऑरेंज कलर, जो कि यूपी या बिहार में शादियों में जो यूज होता है सिंदूर उस कलर का Yes, है। yes, that orange, huh? सो दैट ऑरेंज कलर में पूरा मूर्ति है, और वही टीका भी लगाते हैं लोग उसी का। और दैट प्लेस इज वेरी फेमस फॉर बेसन का लड्डू, दैट इज हिज प्रसाद, वन ऑफ माय फेवरेट डेजर्ट्स और स्वीट डिश इन इंडिया। उससे खूबसूरत, उससे या टेस्टी लड्डू तो मैंने नहीं खाया है, तो मे बी दे यूज सम काइंड ऑफ घी और समथिंग, बट ये बहुत ही अमेजिंग प्रसाद के जो लड्डू या एनीथिंग दैट है। यू गेट ना, बेस्ट इन द वर्ल्ड होता है यार। इवन आई हैव राइट। दैट होल थिंग। डोंट फॉरगेट टू मेंशन कौन से मंदिर में क्या बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट प्रसाद मिलता है। दिस वन आई रिमेम्बर बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू माई नॉस्टैल्जिया। मैं अपने डैड के साथ बचपन में मैं भी जाता था कि चलो पापा ने उठा दिया सुबह से पढ़ाई करने के लिए, तो हम लोग भी कम से कम लड्डू तो खा ही लेंगे सुबह जाके। करेक्ट, यस, राइट। समथिंग हैज सम आरओआई तो चाहिए। करेक्ट। सो नियर द संकट मोचन हम्म। देयर आर कपल ऑफ मोर टेम्पल 500 मीटर के रेडियस में ही। वन इज वेरी फेमस दुर्गा कुंड। दुर्गा कुंड इज बेसिकली अ कुंड, इट्स अ स्मॉल तालाब सरोवर टाइप का है। उसके बगल में दुर्गा जी का काफी पुराना मंदिर है, दुर्गा कुंड उसी मंदिर को कहते हैं। वहां पे द डीटी दैट इज वर्शिप्ड इज कॉल्ड कुष्ठ मांडा देवी, एंड शी इज वर्शिप्ड ऑन 4th
और 5th ऑफ नवमी, आई डोंट नो विच डेट, बट नौ दुर्गा में अलग अलग नौ देवियों का पूजा होता है। आई थिंक शी इज प्रॉब्ली Hmm. ऑन द 4th और 5th. So that temple is extremely famous. Again, very big like Sankat Mochan, extremely popular, very crowded. And next to it, like 100 yards away from that, is the Manas Mandir, which is a Ram Ji ka temple. बनारस में राम जी का टेम्पल प्रॉपर एक ही है जो मुझे पता है. Quite serene, calm, बिल्कुल opposite of what you will see in विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन. Hmm. There's massive crowd. ये बिल्कुल संगमरमर का मॉडर्न मंदिर, बड़ा सा गार्डन है अंदर, काफी सुंदर मंदिर है मानस मंदिर. तो ये मेन सर्किट वाले मंदिर है जो मेन शहर के बीच में पड़ते हैं, जो कि Hmm. पुराने भी हैं और अप्रोचेबल भी हैं, और सबके कुछ पुराने ऑलमोस्ट लाइक रेलिक्स, राइट, सारे पुराने हैं काफी टाइप से, सबकी कुछ कहानियां हैं एंड मस्ट डूज हैं. तो ये तो Okay. बिल्कुल सिटी सेंटर वाले हो गए. एंड ऑफ कोर्स Hmm. व्हेन यू आर गोइंग टू संकट मोचन, वहां से 1 किलोमीटर दूर पे बीएचयू और लंका आ जाता है. बीएचयू गेट जो है मेन गेट ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट प्लेस इज कॉल्ड लंका. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव थॉट कि लंका के क्या लेना देना है बनारस में, लंका से आ Yes. गया, राइट. एंड दैट्स आल्सो अ वेरी फैसिनेटिंग टेल, क्योंकि एज आई मेंशन बनारस में राम जी का एक ही मंदिर है, बट बनारस हैज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ रामलीला. Oh, it's legendary, right? Yeah, या the Ram Leela, there is supposed to be one this या OG Ram Leela kind करेक्ट. of a thing. Huh? So it's still ongoing till today. Scale has probably changed a bit over years, but मेरे को जो बचपन का याद है, आई रिमेम्बर दैट आई, उससे बड़ा क्राउड तो मैंने सिर्फ ईडन गार्डन वगैरह में क्रिकेट में ही देखा था. कभी नहीं देखा था, इतने लोगों को मैंने एक साथ नहीं देखा था. 20-25 हजार लोग आ जाते थे. And Eden Garden में स्टेडियम है, ये स्टेडियम नहीं है. नहीं है, खुले एरिया में हो रहा है बिल्कुल वहां पे. बनारस में काफी सारा, बिकॉज थिएटर का भी सेंटर था, तो नकटैया जो Hmm. होती है जिसमें लक्ष्मण ने नाव काट दिया शूर्पणखा का बिफोर द होल रामायण बैटल, एंड देन भरत मिलाप, व्हेन भरत मीट्स राम, सारा कुछ होता Hmm. था, मतलब 20 दिन वो होता है. पूरा स्किट. हाँ, पूरा स्किट होता था, बट अलग अलग जगह पे. तो बनारस में जगह फिक्स है कि भरत मिलाप होगा तो नाटी इमली करके एक जगह, अगेन वन ऑफ द फनी नेम्स इन इंडिया, इन बनारस, नाटी इमली, वहां पे होता है भरत मिलाप. तो रामलीला का जो मेन एंडिंग जो सीन होता था वो होता था रामनगर में, राजा के सामने होना चाहिए, राजा का राजमहल था, Hmm. पैलेस था रामनगर में, तो वहीं पे मेन रामलीला होती थी. बट जब समुद्र क्रॉस करके लंका में जाना है तो देयर वाज नो अदर वाटर बॉडी एक्सेप्ट गंगा जी, राइट. Hmm. नाव से पूरे रामायण की टोली तो इस पार आती थी. रामनगर वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, वो लोग उधर से बनारस आते थे, और बनारस में जिस जगह पे वो लोग फाइनल फिनाले करते थे लंका में, दैट प्लेस यूज्ड टू बी लंका, जो कि अभी लंका कहलाने लगी, और वहां पे रावण रहता था. तो ओह, सो आजकल भी स्किट में ऐसे ही करते हैं, लाइक दे नहीं, गो अब नाउ तो में एंड नहीं, ऑल दैट. अब नहीं, तो नहीं, अच्छा. अब तो हम लोग पुल वो तो बन गया. अलग लेवल हो जाता है यार. अब तो पुल बन गया. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्री इंडिपेंडेंस डेज व्हेन राजा यूज्ड टू हिमसेल्फ बी द स्पॉन्सर ऑफ दिस, एंड Okay. काफी लार्ज स्केल पे होता था. मैंने जब देखा तब तक तो ऐसा बंद हो गया था. 4-5 तो पुल है बनारस में इस साइड से उस साइड जाने के लिए इस समय. Yeah. तो थिंग्स हैव चेंज्ड, बट दिस इज द फोक दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. एंड आई थिंक प्री इंडिपेंडेंस लंका वाज नथिंग, छोटा सा एक कस्बा टाइप का ही था. इट वाज आउट ऑफ द मेन बनारस, तो वहां पे लोग जाते थे. Hmm. इट वाज इजी टू कॉल इट श्रीलंका इन दैट, इन दोज डेज, और लंका इन दोज डेज, राइट. तो दैट्स हाउ इट पिक्ड अप, एंड अभी तो लंका रह ही गया है. बट इट हैज नो कनेक्शन टू एक्चुअल रामायण, बिकॉज रामायण का बहुत कम पार्ट बनारस में प्ले आउट होता है. Mm-hmm. ऑल्दो तुलसीदास स्पेंट लॉन्ग टाइम इन बनारस राइटिंग रामचरितमानस, बट रामायण का जो कोर स्टोरी है उसमें बनारस का अपीयरेंस थोड़ा कम है. Yeah, like in the entire story, no one visits Banaras or crosses करेक्ट, Banaras kind of करेक्ट. a मेन thing. कैरेक्टर में कोई नहीं Hmm. जाता है. Mm-mm-mm. तो My God. you should go to Lanka definitely. I think if you're doing संकट मोचन, वहां से 5 मिनट है. Hmm. और अगर उस रास्ते पे जा रहे हो तो पहले रास्ते में रुक के जो बनारस की सबसे फेमस कचौड़ी सब्जी है वो खा लो. Very important. सबसे Please इम्पोर्टेंट है tell. बनारस का सबसे मेन खाना, सो वो उस रास्ते पे ही पड़ता है. नाम है चाची का कचौड़ी सब्जी. चाची तो अब नहीं रही, शी आई थिंक एक्सपायर्ड अ फ्यू इयर्स बैक. तो हमने Mm-hmm. उसको देखा है बनाते हुए जब हम लोग बच्चे थे, अब उनके बच्चे लोग संभाल रहे हैं. मतलब Mm-hmm. जितना बड़े में रूम में मैं अभी हूँ, इससे छोटा सा उनका दुकान है. And it is like one of the best. या 40-50 years old, बेस्ट कचौड़ी सब्जी इन द वर्ल्ड. आई नो. मैं कलकत्ता का भी लुची आई लव अ लॉट. आई लव पूरी सब्जी इन मथुरा ऑल्सो, बेदमी पूरी. Oh, I love it बट too. बनारस आई थिंक सेट्स वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑन दिस. मैं आई एम अ बिग फूडी एंड आई एम अ हैवी नॉन वेजिटेरियन मीट ईटर, बट बनारस से बेटर वेज फूड बहुत कम जगह मिलता है. आई कैन टेल यू दैट बनारस वेजिटेरियन लोगों के लिए पैराडाइज है. आई थिंक द ऑफर्स दैट बनारस हैज ऑन टेबल फॉर वेजिटेरियन द वर्ल्ड Oh. अमेजिंग. एंड कचौड़ी सब्जी पर्टिकुलरली आई थिंक लोगों ने हर जगह की तारीफ की है, बट मुझे लगता है बनारस से बेटर कोई नहीं बनाता. एंड दिस हैज नथिंग टू विद नॉस्टैल्जिया. आई एम टॉकिंग as objectively as Pure taste. possible. So you have to do that. लंका गए, लंका में then you enter BHU University.
of course, one of the oldest universities in modern times. The Hmm. whole fascinating story about how Madan Mohan Malviya started asking for funds from Banaras के राजा, from Hyderabad के निजाम and everyone. उन्होंने जूता दिया शायद कि मेरा जूता बहुत एक्सपेंसिव है, उसको उन्होंने ऑक्शन करके पैसा बना लिया. Yes, How yes. he What a also, story, uh, man. What a story. हम लोग का जिंदगी चल रहा है बिकॉज मेरा स्कूल कॉलेज सब कुछ बीएचयू में ही हुआ. आज तक मैं मदन मोहन को थैंक यू कह रहा हूँ. No, what a story. People sold bangles. Of course, Yeah, this Juta story though is one of those OG kind true, of true. stories. एंड जमीन दे दिया राजा साहब ने बनारस के जो Correct. बलवंत सिंह, तो उन्होंने जमीन जब दे दिया तो उसके बाद बाकी था कि बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर के लिए. सो मदन मोहन मालवीय बीइंग द जीनियस एंड द यू नो educator that he was, he used all his channels, and apparently what happened was one of the biggest universities in the country. And there's a very fascinating stat about this, that at one point of time BHU had more students than Kathmandu had people. And that's such a uh, positive thing, educational yeah. institute being like this. सो दिस स्टोरीज वी Hmm. हर्ड ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड की बीएचयू 36 स्क्वायर किलोमीटर में है, काठमांडू जो है वो शायद 32 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो उसका जो क्या कहते हैं मेन एरिया है, जो अर्बन एरिया है, समथिंग लाइक दैट. एंड इट Hmm. कुड नॉट बी ट्रू आल्सो, हाईली पॉसिबल कि इट वुड बी इन द सेम Folklore रेंज, है, but थोड़ा सा एक्सट्रापोलेटेड होगा, बट दैट्स हाउ बिग बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी इज. एंड hmm. once you go inside BHU, it's again it's a different world. You will meet people from all parts of country, some foreign students also. There are a lot of language courses. You'll find a significant amount of Japanese, Chinese people who have come to study Buddhism. Banaras has a massive Buddhism center and culture center also. Of course, ITBHU hai, which has now become IIT BHU and all those things. So there are multiple different things. And within BHU lies the second Vishwanath Mandir, which was built by the Birla family, which is a modern one. Again, a fascinating structure, massive one, taller than Qutub Minar, by the way. उसका जो Wow. peak है 73 meters है apparently. And very modern temple, extremely peaceful. And that is my favorite place. So even when I Mm-hmm. turned atheist and I was in university, I used to go there very regularly. I'll just lie down. पूरे उसके walls पे रामचरितमानस लिखा हुआ है. Oh, beautiful. Very very calm and composed. आपको उसके garden में मोर उड़ते हुए दिख जाएंगे. Oh, BHU University is very nice. green. Yeah, it's very Hmm. green and very rustic. So Tell me one thing. You had mentioned about museums. IIT PhD also has a museum in the campus. It is IIT BHU supposed to नहीं, be BHU का अपना म्यूजियम है. okay. BHU. Mm. हाँ, बीएचयू का संग्रहालय कहते हैं उसको. वो भी काफी पुराना है. इट्स अ बिट ऑफ अ मिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड अ बिट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. Not as massive as some of the bigger museums you find in India. India has amazing museums, but Mm-hmm. still, I think if you're doing a BHU trip, worth giving it a shot. Okay. Definitely worth Okay. giving it a shot. So, yeah, BHU की तो बहुत stories है, but I think once you go there, you have to check the मंदिर, and then you have to check my favorite place in the city, which is called the Limdi Corner. Okay. IIT hostels के सामने there was a place of chai samosa. It is called Limti Corner. Limti is the name of the hostel. उसके corner पे था ये. So this is a literal one. Yeah, this is like one of Samosa. those memories of I had my favorite aloo paratha wala Correct, joint, my correct. favorite Maggi wala joint, वैसे वाला बोल रहे And हो. you can ask all my batchmates or my friends or university guys, and सब लोग वही बोलेंगे कि इससे अच्छा समोसा नहीं मिलता था. I'm very sure उससे अच्छा समोसा बहुत जगह मिलता है, बनारस में ही मिलता होगा. But once you are going to BHU and you are visiting the temple, then why not? एक तो समोसा खा ही हाँ, सकते हैं कभी एक भी. समोसा. और वहाँ का यूनिकनेस है कि बनारस में, ये बनारस का यूनिकनेस है कि बनारस में समोसा छोले के साथ खाया जाता है, मटर के छोले के साथ. अच्छा. बनारस में समोसा छोला बहुत फेमस है. So it's almost like a chart kinds, is it? हाँ, बनारस में हर चीज का हम लोग चाट बनाते हैं. बनारस इज द चाट कैपिटल, राइट? सो बनारस में समोसा का चाट बनता है प्रॉपर, एंड नॉट लाइक द मुंबईया वन. मुंबई में तो ब्रेड के अंदर डाल देते हैं हर चीज को ना. यहाँ पे हर चीज में हम लोग चने का या छोले का यूज करते हैं. I like how people will diss on another city's similar dish. I don't. I actually like the Mumbai food, but I'm very sure that big city people do that. Like Delhi people diss on Mumbai and vice versa on food, right? Massively, yes. It's a large campus, no? It is BHU ka? quite big, quite big. 36 square kilometers. Quite big. Wow, 36 kilometers. Yeah, Wow. yeah. So ideally, if one wants to go to BHU, it's another like जैसे आपने कहा था सारनाथ is like an entire day. हाँ. BHU also is like an entire day नहीं जगह नहीं if you नहीं, want to बीएचयू go. सिटी के नहीं? अंदर ही है. आधा Okay. घंटा लगता है सिटी सेंटर से या स्टेशन से, 40 मिनट लगता है बीएचयू पहुंचने में. एंड वंस यू साइड Hmm. बीएचयू ना, इट्स नॉट क्राउडेड. यू कैन विजिट एवरीथिंग. Okay. सब मतलब बहुत वेल मैनेज्ड है, वेरी ग्रीन, वेरी मच इन कंट्रोल. अंदर का अपना ट्रांसपोर्ट भी था फॉर अ व्हाइल. दे हैड देयर ओन Mm-hmm. बसेस
which takes you from place A to place B. मंदिर के लिए अलग बस है, IIT-BHU जा रहा है तो अलग बस है, अलग-अलग faculties के लिए. So it's quite well managed, very well structured. It's not like the DUs and MUs that you see, right? DU Okay. यूनिवर्सिटी तो scattered है ना, तो वैसा नहीं है. Scattered ये है, तो एक correct. कैंपस के अंदर है और बहुत वेल Hmm. कनेक्टेड इकोसिस्टम है, वेरी वेल मैनेज्ड इकोसिस्टम है. सो 2-3 घंटे में यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. So to go to BHU, it's you go to see the museum and you go to see the temple Temples, in yes. in BHU. And you have to have the Okay, so the samosa. main. Oh, very important. Sorry. Oh my God. Right. Samosa with the little chaat Oh on top, yes. the little chole Yes, on top yes. and all that. Right. Must have, I'm definitely. putting in my Okay, so calendar that's. also because I'm going in Feb, right? So I make sure that I do that. Hey, I didn't ask you, how is the pani puri or the puchka or whatever you guys call it in Banaras? I love pani puri, which has aloo and not matar. So I know that Bombay has matar. I know Lucknow has matar. Oh, Banaras one has butter, but it has mashed potato also. So Banaras में Bengal का influence है and बिहार का तो आलू वाला influence है, but Banaras also has influence of Lucknow. तो बनारस में मटर और आलू का वो मैश करके बनाते हैं, बट ठंडा होता है, गर्म नहीं. I love. बनारस में अमेजिंग पानी पूरी. अगेन I think except for Banaras, the best pani puri I've tried is in Kolkata. I think the best pani puri is in I Kolkata. love, yeah, the Puchka. puchka, yeah, puchka rocks. Very superior to everything I've tried on the pani puri space. मुंबई में मैंने कभी खाया नहीं है. मुंबई में उसको बताशा नहीं, क्या कुछ और कहते हैं ना. Bombay, it is golgappa. नहीं, golgappa is गोलगप्पा इज Delhi, इन ना? दिल्ली. आई थिंक पानी पूरी कहते हैं शायद बॉम्बे में. पानी पूरी कहते हाँ हाँ हैं. हाँ. बनारस में बताशे is in गोलगप्पा ही कहते हैं. Lucknow. हाँ, बताशे लखनऊ, राइट. बताशे is Lucknow. पानी के बताशे, ना? Yeah, that's राइट Lucknow. राइट. So it's puchka, fuchka, golgappa, पानी के बताशे, pani puri, of course. Gupchup, I think, गुपचुप if I'm ऑल्सो. not हाँ, mistaken, Hyderabad is called Gupchup, I think. गुपचुप. हाँ, तो गुपचुप and बिहार of में भी हम course, लोग क्या कहते हैं, हम लोग गाँव में हाँ, गुपचुप कहते हैं लोग. फॉर सम गुपचुप रीजन. कहते हैं. And then of course you have those water balls and all of those things. वो भी तो होने हैं. हाँ, कनॉट प्लेस भी जाना चाहिए कभी कभी लाइफ में. If you're not hanging out with your Yes. South Delhi friends, what are you doing in your life? What are you doing? Yeah, what are you doing? And Sobo and South Delhi Yeah, वाले. yeah. Dude, you were talking about a ramen story ना, मुझे अचानक से याद आया. You didn't finish that. बताओ, what happened after that? So basically हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे कॉलेज के, सो मी एंड अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोग 3-4 लोग का ग्रुप था, वैभव, आदर्श करके. तो हम लोग 4-5 लोग घूमते रहते थे, घाट जाते थे चिल करने के लिए. सो रास्ते में हम लोग मोटरसाइकिल जाते थे, बाइक से, तो एक दुकान हमेशा आती थी, आइबा करके नाम था उसका, IBA. और उसमें बाहर लिखा था कि वी सर्व रामेन, वी सर्व सम ऑथेंटिक चाइनीज जापानीज फूड एंड ऑल. एंड हम लोग ने सिनेमा के थ्रू हम लोग को पता था कि यहाँ रामेन काफी पॉपुलर खाना है जापान का, यूएस में भी लोग खाते हैं, इंग्लैंड में भी लोग खाते हैं, वगैरह वगैरह. तो आदर्श, वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, ही वाज ऑलवेज कीन कि नहीं यार ये तो ट्राई करते हो. मैं हर बार बोलता था यार क्या खाओगे, रामेन अजीब सा लग रहा है, साउंड से ही क्या ये खाना है, इतना अजीब सा खाना होगा. तो उसने 1 साल तक हमें पेस्टर किया, राइट. एंड फाइनली व्हेन ही स्टार्टेड डेटिंग, ही टुक हिज गर्लफ्रेंड देयर, और हम लोग साथ नहीं गया. फिर आके बताया कि बहुत सही चीज होती है, मोटा सा नूडल्स होता है, बहुत अच्छा ब्रॉथ रहता है, वो तुम लोग भी खाना. फिर अगले दिन ही हम लोग भी गए खाने. कि अब हम लोग भी देखे रामेन क्या होता है. सो दैट्स हाउ आई रिमेम्बर दैट लड़की का प्लेस. चक्कर बाबू भैया. क्योंकि मैं उसे बोलता था तू बनारस में है, बनारस का खाना खाना, जापान का खाना क्यों खाना चाहता है. ये तो मेरे लोकल सेंसिटिविटीज को काफी ऑफेंड कर रहा है. तो एनीवेज दैट्स हाउ दैट रामेन प्लेस केम इनटू द बीइंग. एंड ऑफ कोर्स कॉलेज की तो बहुत ही कहानियां हैं, बट बिफोर वी गो इनटू दैट, आई थिंक 2 और इम्पोर्टेंट जगह आई थिंक दैट Yes. everyone should know. So temples so are like hundreds of them. There are Kal Bhairav, which is the protector of Banaras. उनका दर्शन किए बिना आप बनारस से निकल गए तो अच्छा नहीं माना जाता. लाट भैरव है, जो कि उसमें भी रूमर्स है कि वहाँ मॉस्क वगैरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. Lord Bhairav is the one जहाँ पे it's like on a stage where it has a temple and a mosque साथ में almost. हाँ हाँ हाँ. Correct? हाँ, वहाँ पुलिस पुलिस रहती तो है, CRPF वगैरह रहती तो है. But पुलिस सब जगह रहती है वाराणसी में. With the amount of tourism we are seeing, it's Yes. a high alert place, right? So we have to Yes, be yes, careful all the yes. time. And Hmm. I think outside of that, there are a couple of more temples. शूल टंकेश्वर करके एक मंदिर है जो बिल्कुल गंगा जी के किनारे है. So वहाँ से Wow. sharp, staircase into the Ganga river. So the story goes कि priest वहाँ पे नीचे नहाता था और immediately उसको जल डालना होता था शिव जी पे before he gets dry. तो उससे पहले जल डाल देना होता था, तो इसीलिए एकदम शार्प सीढ़ियां बनाया था, कार्डियो वार्डियो करके वो जल्दी पहुंच जाता था. इमीडिएटली वो जल डाल देता था और पूजा कर देता था. That's a Wow. very वो आर्किटेक्चरली इट्स आल्सो ब्यूटीफुल बिकॉज काफी अच्छा आर्किटेक्चर है, शार्प डिक्लाइन है जिससे कि यू कैन गो डायरेक्टली इनटू द गंगा जी. एंड देन द अदर बिग वन इज ऑफ कोर्स द रामनगर का जो किला है, The fort, yeah. हिज हाइनेस का. तो वो फोर्ट अभी तक है, उसके अंदर म्यूजियम वगैरह बना हुआ है. यू कैन सी द ओल्ड स्टफ फ्रॉम ब्रिटिश Is राज, it nice? मुगल.
इट्स नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड बट स्टिल आई थिंक इट्स वर्थ विजिटिंग बिकॉज उससे आपको गंगा जी कनेक्टेड है। सो उसके अंडरग्राउंड टनल्स हैं। जब राजा लोग के ऊपर अटैक होता था ब्रिटिश का, सो दे यूज्ड टू एस्केप थ्रू द टनल्स। दोस टनल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द घाट जहाँ पे बोट वगैरह रहती है। आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल ओपन टू पब्लिक और नॉट, Mm-hmm. बट फैसिनेटिंग स्टोरीज देयर। Correct. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मस्ट डूज बिकॉज उससे कनेक्टेड है बनारस का सबसे मेन खाना जो बनारस की लस्सी है। तो बनारस की जो बेस्ट लस्सी मिलती है, दैट इज नॉट द मैंगो लस्सी दैट यू गेट इन लंदन, दैट इज नॉट द ब्लू लस्सी दैट यू गेट इन सम इजरायली कैफे इन मलाना। वो क्या आप बोल रहे हो, ब्लू लस्सी सो इम्पोर्टेंट। बनारस की मेन लस्सी है रामनगर की लस्सी। इट्स अ थिक हम्म। लस्सी। वो लस्सी चम्मच से खाई जाती है। इट्स सो थिक विथ रबड़ी एंड पिस्ताचियोज एंड कैश्यू नट्स। और वो बिल्कुल जो रामनगर का किला है, जो फोर्ट है, उसके जस्ट बाहर ही मिलती है। एंड देयर आर ओके। फ्यू वेंडर्स हु हैव बीन मेकिंग इट फॉर जनरेशंस। बनारस की सबसे अच्छी लस्सी वो है, या तो जो पहलवान लस्सी वाले जो जनरेशन से बना रहे हैं। आई थिंक दोज आर द वंस दैट पीपल शुड डेफिनेटली ट्राई टू फील व्हाट अ लोकल गोस थ्रू एवरी डे और व्हाट दे डू एवरी डे। I think Ramnagar is a must do, and the other must do, which I think is my number one must do outside of all the religious places, is Sarnath. Oh. Fascinating story about Sarnath is that Buddha, when he moved from Lumbini, of course he was traveling in Bihar everywhere, and then in Gaya he got his wisdom, right, under the Bodhi Mhm. tree. But अब उनको ऐसी जगह जाना था जहाँ उनकी बात लोग सुने, right? So और बनारस being the center of education for years. Oh, I thought because it's a chill place or because it's a center of Yeah, education. sometimes Hmm. correlation can be causation. यहाँ पे ये भी सकता है कि because it was a chill place, that's why Buddha came, or maybe because he came and he brought an amazing philosophy of Buddhism, and that's why the Mhm. place became chill and it kind of got the best of Hinduism, which was already existing, and the new thing that was Buddhism. And with Buddhism, Hinduism, they are very similar in intrinsic factors, right? In intrinsic form, काफी सारे similarities है in terms of nirvana, moksha, life and death, the cycle. So, Mhm. but anyways, when he came to Banaras and then he realized that यहाँ पे education इतना है already level कि अगर मैं लोगों को ये नया philosophy समझाऊंगा उनको समझ में आएगा. So that's why when he did his first preaching, it happened in Banaras in the place called Sarnath. Amazing place, very architectural, very old, amazing excavations, museums हैं, massive amount of Buddhists from Sri Lanka, Japan, China, they have been living there for ages. वो लोग वहीं रह रहे हैं। Wow. वहीं पे वो लोग सीखते हैं, वहीं पे वो लोग काम करते हैं आश्रम में। थोड़ा दूर है मेन सिटी से, आई थिंक 15 किलोमीटर दूर है, बट मस्ट विजिट। मतलब इतना सुंदर जगह है और पुराने एक्सकेवेशंस आर वेरी वेल प्रिजर्व्ड, वेरी Oh, वेल प्रिजर्व्ड। beautiful. तो Hmm. काफी कुछ लर्निंग था वहाँ पे। देयर इज अ लाइब्रेरी आल्सो, काफी कुछ है वहाँ पे। इट्स अ मस्ट टू प्लेस। इट विल टेक द होल डे क्योंकि इतनी कुछ है वहाँ करने के लिए। यू विल रीच देयर इन मॉर्निंग एंड प्रोबब्ली यू विल नीड द होल डे टू गो थ्रू इट। बट I think this should be on everyone's calendar कि अगर बनारस जाए तो you should do Sarnath. Should do Sarnath. So, what are the different things in Sarnath that you should go to definitely when you are there? Also, Right. if there is any eating place as well. हाँ, सो ऑफ कोर्स सबसे मेन तो एक जापानीज बुद्धा टेम्पल है जो कि मेन टेम्पल है वहाँ का। उसके अराउंड एक पूरा इन लोगों ने हाउ डू आई पुट इट, नेचर पार्क टाइप का बनाया हुआ है। हाँ, Okay. यू कैन सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स, फिश, क्रोकोडाइल्स है, स्वान्स है, डियर्स है, बहुत कुछ है। बड़े से एरिया Wow. में है, बीच में वो टेम्पल है। इट्स अ प्रॉपर बुद्धा टेम्पल। Okay. ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इट इज अ मैसिव एक्सकैवेशन जिसका अलग से टिकट लेना होता है। तो Okay. बेसिकली वो 1 घंटे का 1.5 घंटे का ट्रिप होता है जिसके अंदर यू विल सी ऑल द ओल्ड आर्किटेक्चर, पुराने बिल्डिंग्स, देयर रूइंस। दैट इज अ मस्ट डू। आई थिंक दैट्स माय फेवरेट प्लेस। देयर आर लॉट ऑफ Oh, ओल्डर nice. एक्सकैवेशंस एंड वेल प्रिजर्व्ड। देन म्यूजियम है रोड के उल्टे साइड पे, जो मंदिर है उसके अपोजिट साइड में काफी बड़ा म्यूजियम है विद अ लॉट ऑफ ओल्ड प्रिजर्व्ड थिंग्स। Wow. एंड देन देयर द पुराना वाला जो पेड़ है जिसके नीचे बुद्धा ने पहला सरमन दिया था, वो है। Mm-hmm. क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस और आसपास यू कैन फाइंड तिब्बतीज फूड आल्सो। Mm. अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। वेरी नाइस वाइब है, बहुत Very nice. बनारस के क्राउडेड जो लाउड बट लवली वाइब है उससे काफी यूनिक अलग है ये। हाँ, यू विल नॉट Calm फाइंड place. एट ऑल लाइक बनारस। जो कोर है बनारस को वैसा बिल्कुल नहीं है, बट अगेन दैट्स द ब्यूटी ऑफ बनारस। बनारस में ऐसी जगह भी है जो बनारस जैसी बिल्कुल नहीं है। Yeah, imagine, and just like 15 kilometers is nothing, Yeah, man. nothing. Yeah, and this is when you go to this ruins excavations place, do you need a guide ideally कि you can Uh, explore खुद I से? think it's good to take a guide for the whole thing. Okay, Uh, okay. 4-5 घंटे के लिए you should hire the guide because see you will get 60-70% things on your own. मतलब म्यूजियम में Hmm. everything is now written and but guide ढंग से बताता है तो you will start connecting the dots. एक story आ जाता है, हाँ, correct. Which exactly. I like. Hmm.
Oh, nice, nice. So interesting. So Sarnath definitely is like a very unique, hatke from Banaras kind of experience. हाँ हाँ एग्जैक्टली, बनारस का ऐसा चेहरा जो लोगों को बिल्कुल लगे नहीं बनारस जैसा है, तो And you can take a break from the kachori sabji and यहाँ पे go and have some यस यस thukpa and noodles and all that. दैट यू कैन गेट इन मेन सिटी ऑल्सो, बट वहाँ जाके खाने का एक वाइब अलग है। Yes, 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 Right. yes. Okay, Sarnath, very, very high up on the list. But one thing I forgot that I think is a must do, depends upon when anyone goes to Banaras. I think Ganga Aarti on the ghats, right? I think is something when you're doing the whole ghat trip. That's why I said you should do it in evening. And once you Mm-hmm. finish your boat ride, it should end in the Ganga Aarti at the ghat. I think that is another one of those once in a lifetime moments. It's almost like seeing the Pope in Vatican. कि अचानक से नजर पड़ती है, it blows your mind, right? Ganga Aarti is incredible. It's a pure form of art where it's trained professionals who are doing it for decades. They're showcasing their skills. At the same time, it has a massive religious and spiritual angle, and it feels like a force of nature when that happens, right? When they're chanting and when they're doing the whole arti thing, just everything dissolves into that at that point of time. It's must do, I think, top thing in Banaras to do to see the Ganga Aarti, Wow. and ideally at Asti Ghat or Dashashmed. Better Okay. to see it at Dashashmed if you can find a place, but if not, then Asti Ghat for sure. Okay. And they say कि you can see it both from the boat as well as, from sitting on the steps and all Ideally that, from right? the boat, because then you get the Okay. full view, 360-degree view you can see. Mm. So you have to pre-book the boat in advance, get a good slot. Again, Manas crowded to hai, so you have to fight for the spot, but once you get a good spot, it's unreal how good that is. Oh, Yeah. wow. And if you have a chance to go during Dev Deepavali to Banaras, then you'll see the biggest collection of diyas in the world. सारे घाट को एक साथ दियों से रंग दिया जाता है और जला देते हैं दियों को सारे एक साथ। Fascinating Please tell tradition us stuff. about Dev Deepavali because Dev Deepavali is otherwise not celebrated anywhere else. It's a very unique thing जो कुछ कुछ जगहों में होता है हमारे यहाँ like I had no idea of Dev Deepavali until I first saw that there was a small place in Mumbai which celebrates Dev Deepavali. फिर वहां से मैंने देखा कि अच्छा ऐसे भी कुछ होता है and then I saw about Varanasi Dev Deepavali. I was like wow. So tell us more about the festival. अच्छा, that thing I did not know. मेरे को लगता था कि देव दीपावली could be a normal thing. Wow, that's Yeah, there was a place in South Bombay. There's a small place. It's a kund. एंड वहां पे बोलते हैं कि ये गंगा है सो अच्छा। बिकॉज हाँ दैट्स वाई सो वहां पे देव दीपावली वेरी जोर शोर से बनता है ये बनारस में तो बहुत बड़ा है ये, बिकॉज बनारस में इट्स ऑलमोस्ट एज बिग एज दिवाली, राइट? हम्म तो देव दिवाली हम लोग के यहाँ 15 दिन बाद होता है दिवाली के, कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है फुल मून। तो उस हम्म दिन होता है, और उस दिन बहुत बड़ा मेजर स्नान होता है बनारस में। उस दिन सुबह लोग नहाते हैं गंगा जी में। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस डेज टू टेक बाथ इन गंगा। ओके एंड जो हम लोग जब स्कूल वगैरह थे तो स्टोरी ये था कि 10 लाख दिए जलाए जाते हैं गंगा जी के किनारे, 10 लाख। और गंगा जी के घाट पे किनारे किनारे, स्टार्टिंग फ्रॉम रविदास घाट विच इज वन ऑफ द नॉट मेन घाट, अस्सी घाट के बाहर आता है वो, वहां से स्टार्ट करके आई थिंक टिल प्रॉब्लली मिडिल ऑफ ये दशाश्वमेध या कहीं तक, हर घाट पे दिया जलता है। 10 लाख दिए जलते हैं। और मतलब मेन होता है उस दिन नहाना, और उस दिन हम लोग दान वान करते हैं लोगों को। उस दिन ब्राह्मण लोग को ओके दान दिया जाता है, काफी कुछ होता है उस पे, मतलब कनेक्टेड टू द रिचुअल्स एंड ऑल। बट देव हम्म दिवाली विजुअल स्पेक्टेकल है बेसिकली घाट का। अगर वहां जाओगे आप तो उसको देख के ही यू विल बी मेस्मराइज्ड, इतने सारे दिए एक साथ जल रहे हैं इन डिफरेंट yeah टाइम। 10 lakh diyas is like what a sight I can't even imagine general हाँ aarti itself of Varanasi uska jo view itself is amazing and you're thinking 10 lakhs oh my god एंड like इमेजिन it's देव like दिवाली के दिन इफ यू आर सीइंग द गंगा आरती उस दिन हो रहा है, इट कुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू सी दैट। I think the एंड boat guys will charge a bomb to take people हाँ into the river to have that view. Amazing hoga really. नो आई एग्री एंड आई थिंक वर्थ पेइंग फॉर इट। Worth paying the bomb. Yeah, yeah. I can't even imagine. Wow. अनबिलीवेबल। Yeah, yeah. It'll be a sight for sore eyes. What else? What are the other big festivals that you say? So you said Ram Leela is big where
आजकल भी होता है करके बोले. सो हाँ फॉर मी आई हैव लॉट ऑफ रामलीला मेमोरीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. द होल ह्यूज एक एक पूरा स्किट होगा, एंड देन एट द एंड राइट राइट. you will have Jai Shri Ram, and one baan se you will hit throw the arrow, it will hit Ravan say 50,000 fireworks will come and the head will fall and all that. बहुत मजा आता है देखने थे. We used to have a really good time. It's after all a skit and it's fireworks, so मिल मिला के it's like मस्ती. हाँ राइट राइट. हाँ Hmm. फायरवर्क्स तो हम लोग तो बच्चे थे तो फायरवर्क्स वाज द मेन थिंग राइट कि उसके बाद Yeah. फायरवर्क्स होगा. तो आई थिंक बनारस था. बनारस अगेन एज यू वुड ऑलरेडी सीन कि बनारस में इतना कल्चर अंदर घुसा हुआ है कि हर फेस्टिवल बनारस में काफी जोर शोर से सेलिब्रेट होता है राइट. Hmm. बट अगर दो तीन मेन होंगे तो देव दीपावली अगेन इज वेरी नेटिव टू बनारस. बट बनारस का शिवरात्रि आई थिंक डिफरेंट लेवल. द Oh होल yeah, it must be something else. Correct, correct. मतलब दैट डे बनारस बिकम्स अ यूनिक एनिमल इन इटसेल्फ. उस दिन पूजा से लेके भांग के कंजम्पशन से लेके पीपल गो मैड ऑन शिवरात्रि एंड पीपल गो मैड ऑन होली. लाइक होली इन बनारस इज आल्सो डिफरेंट लेवल. आई हैव हर्ड थिंग्स Oh. अबाउट ब्रज की होली एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस इन इंडिया बट बनारस हैज अ क्रेजी होली सीन एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर जनरेशन. मतलब मेरे डैड लोग को मैंने देखा है द वे दे हैव celebrated Holi, हम लोग की generation, and now I'm seeing even the younger kids, these kids are still celebrating Holi like how it used to happen years back. तो बनारस की होली इज अ पब्लिक होली. मतलब Do you have memories of Banaras Holi celebrating it? बहुत है. मैं तो लास्ट ईयर का भी है तो मैं तो चला जाता हूँ बनारस में होली पे. तो मेरे को तो बहुत पसंद है It's the बनारस. best to go during festivals. अ लॉट ऑफ ग्रेट मेमोरीज. मेन ये होता था कि हम लोग ग्रुप बना के निकल गए कहीं भी चले गए एंड नो वन केयर्स अबाउट हु इज हु. कहीं भी गो किसी के घर पे भी खा पी लिए भांग फूक Anyway, no लिया. one can recognize the No other. one can recognize, right? So the whole city becomes a one giant living, breathing animal on that day, right? तो होली के तो बहुत मेमोरीज हैं. शिवरात्रि के भी काफी फनी मेमोरीज है. वन ऑफ माय फ्रेंड हैड अ लॉट ऑफ भांग एंड देन ही जस्ट लॉस्ट ऑल हिज सेंसेस. भूल गया रास्ता ही एंड ही स्टार्टेड फीलिंग ही हैज लेफ्ट बनारस एंड ही हैज मूव्ड टू सम अदर कंट्री. Some of the country, ऐसे भी नहीं है हाँ कि चलो मैं लखनऊ चला गया. Some of the country, very नहीं nice. they felt that so one of the part of Banaras is called Maldaiya. Again I wonder where that name would have come from but वो लोग उस मेन चौराहे पे उन्होंने बाइक पार्क कर दिया एंड आई वाज मेकिंग मटन एट अनदर फ्रेंड्स प्लेस and I was already there cooking and these two guys were supposed to bring some stuff from the hostel to this place Is and the stuff called yeah. bhang? Then bhang to we had done bhang. They had अच्छा, done bhang. We okay. had done bhang together but I had left early. Hmm. But इन लोगों को थोड़ी देर बाद चढ़ गया and then they stopped the bike in the middle of the road and they're like seeing lights and hallucinating like crazy and then calling me telling me यार सैन फ्रांसिस्को आ गया गोल्डन गेट ब्रिज दिख रहा है ये दिख रहा है वो दिख रहा है. मतलब क्या हो गया यार मजाक कर रहे हो. अभी मैं मेहनत कर रहा तुम लोग के खाना बना रहा हूँ ये कर रहा हूँ. So then but after 30-40 seconds I realized कि नहीं I think इनको hit कर गया because भांग can be hit and miss but when it's hit right it hits crazy. Oh. Then I told them after 10 minutes of negotiation they could not convince me. तो मैंने बोला कि अच्छा कोई आसपास है उनको फोन दो मैं बात करता हूँ. तो then I talked to some guy nearby. Then he said अरे सर ये लोग मल्लैया चौराहे पे खड़े हैं पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं कब से आप आ जाओ लेने इनको. So then our भैया ही Dude, you have to went. send this episode to them. Okay, they have to like listen and laugh. It's Oh so yeah, crazy. this is our regular joke. So whenever our friend group sits together, this story always comes up. Golden Gate पहुंच गए To, तुम ऐसे. 2008 in Banaras Shivratri. So, and But you again, still get a yeah, lot of bhang shops अभी भी है ना? government sponsored. Banaras में भांग is sponsored by government. So government की दुकानें खुली हुई हैं. It's a Good cultural thing. stuff. Good stuff. And I think so. You should do it with someone who has done it before. Damn, I really was looking forward to trying it यार. और तुम कह रहे हो कि I have to like have do caution. Reduce the quantity. So जो भी बनारस का बंदा बोले एक गोला लेने को, tell him that 1/4 लूंगी मैं. Don't go by the Banaras measurements. Okay. This is like bargaining. जब 100 रुपए हाँ बोलेंगे हाँ 25 पे स्टार्ट करने का, वैसे क्योंकि एक वो गोला लोग हफ्ते मतलब में मैं 3 दिन 1/4. खा रहे हैं. उनकी बॉडी इम्यून हो चुकी है. उनको भांग अब सब्जी की तरह लगता है. तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा. मेरे घर में मेरी मॉम खुद से भांग पीसती थी. हम लोग के भांग का पौधा था. तो हम लोग क्या खुद भांग छाना जाता है. बनारस में भांग इज पार्ट ऑफ मतलब कल्चर काफी हद तक. Culture. मतलब कंज्यूम नहीं करते हैं ज्यादातर लोग अब. मतलब धीरे धीरे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट कैन be considered not ideal but Right. culturally it is still very acceptable, way more acceptable than anything like alcohol and all in the society. But at the same time I've seen few stories. I do feel that there should be some caution in terms of how much capacity Yeah. quantity you are consuming. Yeah. And I don't any want to see local, Golden Gate Bridge, yeah man. वही local बंदा जो भी बोले उसको 75% कम कर दो.
तो बोले एक गिलास भांग पी लो ठंडे के साथ, टेलिंग कि नहीं यार मैं तो एक छोटे चाय का गिलास ही, कटिंग चाय ही पी सकती थी। तो And how do you usually consume bhang? तो बनारस में दो मेजर तरीका जो मैंने देखा है, एक तो एक Hmm. भांग का गोला बना के लोग खा लेते हैं, चू करते हैं थोड़ा Hmm. सा, देन दे जस्ट सटक इट। बट जो Hmm. उससे ज्यादा जो इजी है वो है कि भांग को यू मिक्स इट विद द ठंडाई, मेक इट अ ड्रिंक, Hmm. देन यू टेक इट। काफी टेस्टी होता है ठंडाई तो ऐसे भी। Correct. ठंडाई यू टेक इट, द ओनली थिंग इज दैट कि हाउ मच क्वांटिटी यू पुट इन द ठंडाई, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज गोला बनाते में यू कैन सी ना कि कितना बड़ा गोला है, 1 ग्राम का है, दो Yes. ग्राम का है, बट व्हेन यू आर डूइंग इट विद ठंडाई देन समटाइम्स विल पुट अ बिग चंक एंड मिक्स इट, लगे यार ये बहुत थोड़ा सा गया है। तो और इतना टेस्टी पूरा ही पी लेती हो हूँ. ही जाओगे पूरा आप तो, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। Okay. Okay. Very good tip. Okay. Holi and bhang is anyway like synonyms. It या has to go एग्जैक्टली, together, हैंड इन हैंड। hand in hand. एंड होली इज द आइडियल टाइम टू विजिट बनारस। आई नो देव Mm-hmm. दीपावली इज अ ग्रेट टाइम, बट मुझे लगता है कि बनारस का जो स्पिरिट है दैट रियली कम्स आउट ऑन होली। Wow, I have seen pictures, man, and it is हाँ, legendary, na, to राइट, rang udte hue on the ghats. करेक्ट, One of the pictures of Banaras also a holy picture that is there, राइट, colorful राइट, and all that. But for फेमस someone वन। who's not very comfortable, it's a little scary to see that number of crowd together. For sure. Banaras can be very intimidating by sheer scale and Yeah, force. So that caution, I think, for any key tourist place in India, you have to be careful about that that. is true. That is true. So you have to maintain that balance between what is the best time and best experience that you can do versus what Hmm. is the doable Ideal. experience also, right? कि Hmm. हाँ, ऐसा ना हो कि भीड़ में चोट ही लग जाए। Correct. Correct. So you have to be careful about that. Hmm. Yeah. And how is like the Kumbh Mela scene and all of that? कुंभ मेला के दौरान बनारस में जो इम्पैक्ट आता है, as I mentioned, it's a residual impact, right? क्योंकि Hmm. इलाहाबाद sees all the crazy traffic, Yes. but Yes. because Banaras is also part of the whole holy Hindu circuit, so उसमें Hmm. लोग वहां दर्शन करके, a lot of people while retreating back they come to Banaras, so Hmm. traffic increases for sure, and there is a definite impact on trains, on buses which are coming from Allahabad to Banaras, and there's a massive traffic influx that happens, but कुंभ तो इलाहाबाद में ही देखने में मजा आता है, जो वहां पे That is जो true. रौनक होगी वो अलग लेवल की होती है। Again, it's one of those scary things. For me, seeing Yeah, like 50 lakh people together is like, oh my God, yeah, wala ho I jata will hai. never go there. I've never been to Kumbh. I'll probably never go there. But Yeah. for people who really can live with that, I think their life will really get enriched. Mm. But it is an experience for sure. So if you really can go through it, it will be unforgettable in a positive way. Of course, True, it will be true. overwhelming, but it will be unforgettable. So 20 years back or 10 years back, like my mom used to go to Kumbh every time it happened in Allahabad, and every time she's gone Oh, progressively, she has said that it has become easier and better. nice. Very nice. Yeah. Very nice. Tell us about the like Banaras's chart, the capital of chart according to you. अभी फिलहाल हमने सिर्फ एक समोसा चाट की बात की है बस. which is not in the main chart, arena, Yeah. tier 2 का चार्ट है वो। तो बनारस का जो 5 या 6 मेन खाना है, आई थिंक इट्स फिनोमिनल। Hmm. चाट, लस्सी, समोसा, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट टॉक अबाउट पान इन बनारस, Yes. OG, Amitabh Bachchan, man. एंड ऑफ कोर्स मिठाई, राइट? आई थिंक दीज आर द 5 पिलर्स, ये 5 स्तंभ है बनारस के खाने पीने के, बनारस के फूड कल्चर के, culinary कल्चर के। Mm. Mm. Lassi we already discussed, I think, but chaat pe I think, and this is coming from someone who is not a big chaat fan himself. I prefer puchka and pani puri over chaat. Mm. But जितने भी जगह मैंने चाट खाया, वेदर इट इज लखनऊ, दिल्ली का चाट लोग बहुत तारीफ करते हैं, राइट? दौलत की चाट की लोग बहुत तारीफ करते हैं, मतलब अगेन आई थिंक दैट इज मोस्टली नॉस्टैल्जिया, नॉट ऑब्जेक्टिव। बनारस हैज फिनोमिनल चाट, अब तुम बोलो मलाइयो इज लाइक द थिंग. जैसे मलाइयो मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया, हाँ, बिकॉज आई थिंक दैट दूध से बनी हुई बेटर चीजें मैंने खाई है लाइफ मलाइयो से, हाँ। बट आलू और उबले हुए मटर में इससे बेटर चीजें मैंने नहीं खाई है। या टमाटर डाल के। तो बनारस में ऑफ कोर्स God. चाट के काफी सारे वैरायटीज हैं। यू गेट द टिक्की चाट विच इज द मोस्ट फेमस वन। उसके भी Mm. 2-3 वेरिएंट्स मिलते हैं हर दुकान में। एक में होता है टिक्की को मैश नहीं करेगा, टिक्की के ऊपर से मसाला डाल देगा, देन दे विल पुट द छोला एंड ऑल, देन दे विल गार्निश इट अगेन विद प्याज, मूली, टमाटर एंड एवरीथिंग, एंड दे विल गिव यू। Mm. Mm. एक होता है इसमें टिक्की को पूरी तरह मैश करके, उसके अंदर छोले को मैश करके, उसका एक पल्पी लिक्विड टाइप का बना के, सेमी लिक्विड, उसके ऊपर प्याज Mm. टमाटर मसाले डाल के देते हैं, विच इज माई फेवरेट।
The third one, which probably you only get in Banaras, or mostly get in Banaras only, is the टमाटर चाट. उसमें पूरा एक साबुत टमाटर की चाट बनती है, उसको क्रश करके छोले के साथ मिला के देते हैं, आलू को रिप्लेस कर देते हैं टमाटर से. A lot of my हम्म. friends who came to Banaras from outside, वो लोग यही बोले कि उन्होंने टमाटर की चाट कभी नहीं खाई थी, बाकी सारे टाइप की चाट मैंने खाए थे. कभी सुनी भी नहीं है. आई हैव ओनली हर्ड दिस इन बनारस. अच्छा. आई हैव हर्ड अबाउट बना टमाटर चाट. आई एम अ ह्यूज चाट फैन. हाँ. मैं सब जगह जाके चाट खाती हूँ, बट आई हैव नेवर सीन टमाटर चाट. ओह वाह, सो टमाटर चाट तो बिल्कुल हम्म. यूनिक है तब तो बनारस के लिए. एंड आई थिंक कि जो भी खाता है वो बनारस में टमाटर चाट का तो भक्त हो ही जाता है. मतलब हम लोग तो तब से भक्त है जबकि भक्त का डेफिनेशन नहीं था कंट्री में. सो टमाटर चाट इज यूनिक. देन देयर इज वन थिंग दैट दे गिव इन पुरवा. आई डोंट नो हिंदी वर्ड क्या है. पुरवा इज अ भोजपुरी वर्ड फॉर, जिसमें जो मिट्टी का बर्तन होता है ना छोटा वाला, हम्म. उसके अंदर डाल के देते हैं विद अ लॉट ऑफ सेव का नमकीन बना के. उसके अंदर ओके. वो मैदे का जो निमकी होता है, रेक्टेंगुलर वाला ट्रेपेजियम टाइप, हाँ, डायमंड डायमंड शेप शेप वाला का, जो हाँ. थिंग होता है. वो हाँ सब हाँ डाल के उसके हाँ. साथ चाट बनती है एक, जो कि मेन दुकानों में नहीं मिलेगी, बट जो आप बनारस के मेरे जैसे लोग जो कि लोकल हैं उनसे बात करो तो हम लोग ये बचपन से काफी खाए हैं. कहाँ मिलता है और क्या बुलाते हैं उसको, कुछ तो बताओ. ये तो हम लोग तो इसको कपटी का चाट, बनारस में कपटी कहते हैं इसको, इस वाले बर्तन. हाँ, बिकॉज कप है वो. हाँ. कप है टी पीने के लिए ना. तो तो मिट्टी का कपटी जिसको पुरवा कहते हैं एक्चुअली. आई नो भोजपुरी जो हम्म. बनारसी भोजपुरी है उसमें पुरवा कहते हैं उसको. सो मोस्ट ऑफ द बड़े शॉप में यू विल फाइंड दैट, वहाँ रहता है वो. एंड खाने के लिए तो दो ही जगह मुझे लगता है जो सबसे अच्छी है. अदरवाइज बनारस में चाट हर जगह ही 9 आउट ऑफ 10 मिलता है. अगर आपको टेन ओके. आउट ऑफ टेन खाना है तो यू हैव टू गो टू द ओल्ड एरियाज विच इज गदौलिया, जहाँ पे दशाश्वमेध घाट वगैरह मंदिर वगैरह है. वहाँ पे काशी हम्म. चाट भंडार, आई थिंक यू कांट गो रॉन्ग विद दैट. इट हैज बिकम एक्सट्रीमली हम्म. टूरिस्टी, सारे ब्लॉगर्स कवर या, कर लिया है. इट्स वेरी फेमस. वेरी या. फेमस. या. बीना भी काफी फेमस हो गया है. बट मतलब आई थिंक इफ यू वांट टू अवॉइड दैट हैसल व्हिच आई जनरली डू, मैं कभी नहीं जाता हूँ इन जगहों पे. आई गो फॉर अ 9 आउट ऑफ 10 एक्सपीरियंस, जो कि बनारस में आप रैंडमली किसी भी चाट की दुकान में चले जाओगे, चाट विल बी फिनोमिनल. फुचका मतलब गोलगप्पा एंड Oh. चाट, most of the shops will do 8 or 9 out of 10, which is amazing for me. I mean, I will have three more charts instead if I go to a 9 एब्सोल्युटली. out एनी of वे ट्राई 10 place. वैरायटी. पसीना नहीं आ रहा है, बैठ के आराम से खा रहे हो, दो दो बातें कर सकते हो दुकान वाले से कि क्या बनाता है. यू कैन हैव अ मोर होलिस्टिक बहुत एक्सपीरियंस. मजा आता है. या. तो चाट के लिए ये है. देन अनदर थिंग दैट इज वेरी फेमस इन बनारस आउटसाइड ऑफ लस्सी इज लौंग लता, राइट? I know हम्म. Long Lata comes from Kolkata. A lot of the meetha in Banaras comes from Kolkata, as you would imagine. So Bengalis, when they migrated to Banaras, they brought the whole या. छेने का culture, right? Banaras did not have छेना. हम्म. छेना फाड़ना नहीं आता था बनारस में. When Portuguese came to Bengal, they taught them how to create छेना and paneer. They brought that culture to Banaras. So Banaras में रसगुल्ला amazing मिलता है at few places, and me and my wife kind of bicker over it every day. मुझे लगता है एक दो जगह बनारस में कोलकाता से बेटर रसगुल्ला मिलता है. से बेहतर होता है. एक दो जगह एंड जिस जगह में मिलता है उस जगह का नाम भी बंगाल स्वीट हाउस ही है. मैं I was in Delhi a couple of weeks back, and there was one place that people really recommend कि you must go and have charts there. कौन सा? Bengal Sweet House. So I actually went Authentic. twice and had charts in Bengal Sweet House in Delhi. No, I agree. So Manas में when the Bengalis migrated, right, I mostly for education and also during the Sati Pratha when it was on, right, before. Yeah. So विधवा औरतों को भेज देते थे बनारस में to stay in विधवा आश्रम and Yeah. also they brought their Mm-hmm. cuisine and everything. My massive migration. Banaras has a big Bengali population even now. Mm-hmm. So बहुत इन्फ्लुएंस है उनके खाने का, कचौड़ी सब्जी से लेके मिठाई. तो मतलब बनारस में, कोलकाता के बाहर बनारस से बेटर मिठाई मैंने नहीं खाई है. रसमलाई, रसगुल्ला, छेने का जितना भी चमचम, सब कुछ जो कोलकाता में फेमस है, सब कुछ बनारस में बहुत अमेजिंग मिलता है. एंड लौंग लता भी वन ऑफ Okay. देम, जो कि क्योंकि बाकी चीजें यू कैन फाइंड एवरीवेयर, राइट? एवरीवेयर यू कैन फाइंड रसमलाई. Mm. हल्दीराम भी बनाने लगा है अब तो. मतलब इट्स as Exactly. Yeah. commoditized as that. But long lata is something that outside Kolkata, Banaras में it is amazing, and you can go to pretty much again किसी भी दुकान में घुस जाओ, you will find it like 8 9 out of 10. बहुत ही अमेजिंग होता है. Oh. बनारस में समोसा, लौंग लता, रसगुल्ला, चाट वगैरह जनरली यू कांट गो रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम्स. लोकल लोग काफी ड्रामा करते हैं बिकॉज हम लोग Nice. बचपन से 9 आउट ऑफ 10 खा रहे हैं, तो हमें 7 या 8 मिल जाता है तो खराब लगता है. बट जनरली यू कांट गो रॉन्ग इन बनारस विद दीज फ्यू थिंग्स. So what you might call seven, I might call them nine more. 8 or 9 could be, yeah. Yeah. Anyway, I'm not a foodie, but I love chaat. So just chaat wala foodie I am. हाँ, so चाट वाले फूडी के लिए तो बनारस बिल्कुल पैराडाइज है. बिल्कुल पैराडाइज. Oh my God. And just down them with a lassi every other time. आई थिंक लस्सी और चाट, मतलब एक बार समोसा या चाट में से कुछ एक गर्म चीज खा लिया, उसमें तो कूलिंग के लिए चाहिए. बनारस इज अ हॉट सिटी, राइट? Yeah. Why not?
And what about meat? Any legendary places in Banaras for having meat? Uh, I mean, for meat eaters like me, some of the best chicken, some of the best biryanis and all you find in this place called Dal Mandi, which has amazing kebab for food, and it has a lot of merchants who are into different kind of art and craft and everything, Mm-hmm. and making artisanal stuff and all. Oh, nice. And pans? Funny thing about pan is I don't eat pan. मैंने पूरी लाइफ में शायद 2 या 3 बार पान खाया होगा, मेरे को अच्छा नहीं क्या लगता है। कह रहे हाँ, माय हो? डैड हैज ईटन पान, आई ऑल माय फ्रेंड्स दे ईट पान। मेरे को समहाउ पान नहीं पसंद है। एंड बनारस में पान का कल्चर, आई नो पान 3 4 जगह पे बहुत फेमस है। कलकत्ता में लोग बहुत पान खाते हैं, Yes. एंड पटना में पान खाया जाता है, मगही। Mm, उड़ीसा में लोग yeah. बहुत पान खाते हैं, बांग्लादेश में तो ढाका वाका में बहुत ही पान खाया जाता है। बट बनारस में पान हैज गॉन बियॉन्ड, आई थिंक, फूड। आई थिंक इट हैज बिकम ingrained in the identity of Banarsi people. बनारस के लोग बिना पान के बात नहीं करते हैं, कभी बात करें तो मुंह में पान रहता ही है। Oh मतलब God, which means all the roads will have red हाँ stains हाँ हाँ, everywhere also. स्टेशन पे उतरोगे आप, पहले ऑटो वाले से बात करो, पहले से कहाँ जाना है आपको बताइए, अभी आपको लेकर छोड़ देते हैं। वो पहले वो पिचकारी मारे। Purr करेगा and हाँ, then only you can तो बोले, अच्छा मैडम चलिए बैठाते हैं आपको, 50 रुपए। तो पहला बात ही आपको होगा तो पान के साथ होगा। और मतलब बनारस में अगेन बहुत फेमस फेमस पान प्लेसेस हैं। आई थिंक जो मेरे को सबसे फेमस पता है, अगर मेरे डैड लोगों ने जो जगह से खाया है, केशव तांबुल करके एक होता था पुराने बनारस में, रथ यात्रा करके एक जगह थी वहां पे, वो काफी फेमस था। केशव तांबुल, एंड देन देयर इज वन मोर नियर लंका, जो कि वैरायटी ऑफ पान देता है। तो बनारस के लोकल लोगों को उतना हम लोग को वैरायटी का पान पसंद नहीं है कि गुलकंद ज्यादा डाल दिया, ये हम लोग को रोज अच्छा। खाना है 4 5, तो इतना रिच नहीं खा सकते ना। तो Ah, that's true, that's बट true. जो टूरिस्ट आता है वो बोलता है, "अरे भैया इसके अंदर ये भी डाल दो।" एंड आई सीन इन दिल्ली एंड ऑल, बैंगलोर में भी ऐसा है, हाँ फायर पान एंड ऑल। मैंने लिया है। मैं बोला ये क्या ड्रामा है यार, बनारस में 2 रुपए का It मिलता is है। just, it is 100% drama only. आ करेंगे फायर, हाँ, कुछ भी नहीं होता है. तो It's बोले एक तो just 100 रुपए का पान, मेरे पिताजी का मंथली बजट होता था पान का 100 रुपए। एक बार में 100 रुपए का पान खा लिया, और उसके बाद इतना कुछ डाल दिया, चॉकलेट डाल दे रहा है, क्या डाल दे, चॉकलेट पान आ हाँ. गया, पता नहीं रसमलाई पान आ गया। सो बनारस का पान मीन सिंपल पान खाओ, सिंपल सुर्खी चूना तंबाकू डाल के बढ़िया से बना के देगा आपको, अच्छा कत्था, हल्का सा वो आपको टिंग भी देगा, हल्का कट करेगा उसका चूना, और हम्म. प्रॉपर पान का मजा आएगा। आपको मीठा खाना है तो मीठा बनवा लो, आपको मतलब पत्ते वाला खाना है पत्ते वाला। हम्म. And the funny thing about pan in बनारस is that पान काफी heavily consumed commodity है बनारस का। बट बनारस का जो सॉयल है, एग्रीकल्चर, वो अलाउ नहीं करता बनारस में पान के पत्ते का कल्टीवेशन। तो फिर. बनारस में सबसे ज्यादा जो पान का पत्ता आता है वो मगही पान का आता है बिहार से, और उसके बाद आता है उड़ीसा से का कोई जगन्नाथी पान होता है, और तीसरा कलकत्ता से आता है, कलकतिया पान पत्ता। तो कलकतिया तीन ओ. नंबर पत्ता एक आता है जो बहुत बड़ा है बनारस में, आई थिंक। उसके अलावा एक मगही पान का पत्ता आता है जो बहुत फेमस है, और उड़ीसा का एक पत्ता आता है। तो ये सारी चीजें बनारस में, मतलब ऑफकोर्स मसाला तो अंदर का बनारसी लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, तंबाकू एंड Yeah. एवरीथिंग, बट पत्ता जो है वो बाहर से आता है बनारस में मोस्टली। So your wife wins in this point. Calcutta is one step higher in pan. पान में आई कैन लेट हर टेक द क्रेडिट, पान उनके अच्छा होता होगा। Very nice. Oh, man, I'm thoroughly enjoying your kahaniya, Pushpendra. Baap re. So tell me, how was college life in IIT BHU? आईटीबीएचयू का लाइफ काफी यूनिक था। सो कॉलेज के काफी सारे फनी इंसिडेंट्स हैं। एक तो मैंने भांग वाला बताया ही, Yes, जहाँ पे सीधा हम लोग सैन फ्रांसिस्को पहुंच पहुंच गए गए थे. थे फर्स्ट ईयर में। we had one day when we had a pen down movement, so we were protesting against something, I don't know what। कुछ तो स्टूडेंट स्ट्राइक होता है, एंड बीएचयू had the students union that back in the days यूनिवर्सिटी में। Were you part of the union and all that? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स Yeah. has always fascinated me, but I've kept my distance। So but I have definitely enjoyed the time during the dharnas and strikes। मैं लोकल था, so we were all new in university that time। तो मैं सबको बोला कि यार एक अच्छी जगह चलते हैं। सब लोग 7 या 8 लोग थे, सब लोग के साइकिल पे थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग को थोड़ा रोका हुआ था बाइक। तो सबको ने बोला कि मैं सबको बहुत अच्छे ढाबे लेके चलता हूँ। तो बनारस से इलाहाबाद का जो रोड है, दैट इज हाईवे, एंड दैट इज द सेम हाईवे, जीटी Okay. रोड, बेसिकली दिल्ली टू हावड़ा वाला जो जीटी रोड है, Grand Trunk. रेड ट्रक पे ही है। तो उस हाईवे पे काफी फाड़ू फाड़ू प्यारे ढाबे हैं, मतलब बिल्कुल खूबसूरत खाना, बिल्कुल टिपिकल रस्टिक माहौल। Oh, lovely. हाँ, अब तो चेंज हो गया, तो सब कुछ मॉडर्न हो गया, तो एसी भी लग गया है वहाँ पे काफी। तो अभी भी अच्छा होगा. It'll be better than many ट्रू, other दैट आई experiences. बिलीव, दैट आई ट्रूली AC बिलीव। है तो I don't mind वैसे. तो आई टोल्ड एवरीवन कि चलते हम्म. हैं। तो सबने बोला कितना दूर है, बोला 3 4 किलोमीटर है। तो हम लोग साइकिल से चल लेंगे ये वो।
तो Hmm. उसमें एक मेरा जो रूममेट था संकेत, ही वाज डूइंग डबलिंग, तो वो किसी और को बैठा के चल रहा था। हाँ, और हम लोग 8 में से 3 बनारस के लोग थे, बाकी 5 बाहर के बंदे थे। और हम जो 3 बनारसी थे, हमने बोला यार शॉर्टकट लेते हैं, तो गांव के अंदर से एक रास्ता Hmm. है। तो हम लोग का कॉलेज जो था वो बाहर है थोड़ा शहर से, बीएचयू इज अ बिट आउटसाइड द मेन सिटी। Oh, real हाँ, India, real हाँ, रियल India. इंडिया। तो हम लोग अंदर घुस गए, और मैं अंदाजे से बोला यार उसने, दैट इज वे बिफोर गूगल मैप्स एंड ऑल द स्टफ, राइट। एंड तो Mm-hmm. हम लोग अंदाजे गए, और मुझे काफी कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरा घर काफी नजदीक था, वहां से 1.5-2 किलोमीटर दूर ही था। तो मुझे लगा मैं तो ले जाऊंगा। Mm-hmm. एंड वी लॉस्ट आवर वे इन द विलेज। 6-7 किलोमीटर हो गया, मेन रोड ही नहीं आ रही, हाईवे वाली। Oh, and that guy is doubling. डबलिंग और सके तो मेरे को गाली And by दिया जा any रहा है। chance, was the person with him a girlfriend at least? नहीं, 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 हाँ, फिर तो उसकी बंदी उसी दिन छोड़ देती है उसको। कि कैसे लड़कों के चक्कर में पड़ गया ये। तो एनीवेज, वी Point. टुक लाइक 8.5 9 किलोमीटर्स, 1.5 hours of toiling, गांव में एक एक इंसान से रास्ता पूछते पूछते वी रीच दैट प्लेस। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ वी ऑल टेस्टेड बियर। दैट्स हाउ इट एंडेड। Oh, सो क्या बात है. काफी, Great end to the story हाँ, for हाँ, वी sure. टुक लाइक 1 beer among 8 people, 6 of us tried it, एंड सबको लगा कि यार काफी ज्यादा हो गई आज तो। इतनी इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। हाँ, मैं हाई हो गया. अभी वापस कैसे वापस कैसे जाऊंगा मैं जाऊंगा, आठ मैंने बोला मेरे को किलोमीटर भी कोई डबलिंग कर लो यार, मैं तो नहीं चला पाऊंगा। सो दैट वाज द मुश्किल से ट्रिप। 2 सिप लिया होगा. हाँ, एक 2 सिप बियर हुआ, अमंग सबको लग सिक्स रहा है, सेवन सब एक दूसरे पीपल से बोल भी रहे हैं यार तेरे को ज्यादा चढ़ गई, मेरे को तो थोड़ा ठीक लग रहा है, तेरे को ज्यादा चढ़ गई लग रहा है, तू थोड़ा ध्यान सब रख। हीरो बन रहे हैं. सो क्यूट. सब बटा, वेरी मेमोरेबल बिकॉज पेन डाउन हो रहा है फॉर सम रीजन। कॉलेज बंद हो गया, सारे लड़के निकल गए कि खाना खा के आते हैं, लंच करके, लंच डिनर में तब्दील हो गया, कब पता नहीं चला, लेट हो गया। तो ये जो एनेक्डोट है, ये ऐसा 4-5 हुआ है, मतलब यहाँ या 10 लड़के बिना रीजन के किसी भी चीज को करने के लिए सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, कोई बोलेगा चलना है, हाँ चलना है, कहाँ चलना है चलो. पूछेगा। भाग वाले दिन भी ऐसे ही हुआ, 6-7 लड़कों ने सुबह डिसाइड किया कि आज हम लोग मीट बनाते हैं, ये सब। तो हाँ, सब लोग रेडी हो गए कि होली के दिन तो मीट खाना चाहिए, तो मतलब नो क्वेश्चन आज टाइप का हम लोग का सर्कल था। कोई लॉजिक नहीं यूज करेगा क्या क्या करना है. लॉजिक तो सवाल ही नहीं है। बनारस में आए तो आपने लॉजिक तो छोड़ ही दिया होगा। So these are all nice college stories, हाँ, man. But abhi bhi, if you want to go to have a dhaba experience, you can एवरीथिंग go इज to स्टिल देयर। outskirts हाँ, of सब कुछ है, BHU बनारस and में all है। हाँ, that. हाँ, मतलब 15-20 minutes Oh, फ्रॉम द कैंपस यू कैन स्टिल रीच डिसेंट ईटिंग प्लेसेस, एंड देयर फूड इज स्टिल वेरी गुड। मतलब मैं तो जाता रहता हूँ बिकॉज hmm. मेरे घर से भी नजदीक है, प्लस आई स्टिल मीट माय फ्रेंड्स देयर कभी कभी। सो क्वाइट गुड फूड। रस्टिक नहीं रह गया है उतना, बट एटलीस्ट द शेफ्स एंड कुक्स तो वही है पहले वाले। It's nice that you call them chefs. I like it. Fantastic. Oh my God, Pushpendra, बाप रे. I really want to go now. सच्ची में like you were saying the beginning ना, फ्लाइट से ले कर सकती हो तुम्हें पॉडकास्ट में, सच्ची में ऐसे कर सकती हूँ. आई सेड ट्रेन। But I have to fly to Delhi. I'll fly to Delhi. वहां से I will definitely do a train arrival into बनारस जब भी मैं जाऊंगी, and I'll tell you कि मैं इस ट्रेन से गई थी. And you should definitely club your Banaras trip with Allahabad, with Prayagraj. I think ideally Banaras, Allahabad, Lucknow is a circuit, but if nothing, then Banaras, Allahabad should definitely be on your list together because एक तो बिल्कुल बगल में है, 100 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे में पहुंच सकते हो बनारस से इलाहाबाद, 120 किलोमीटर है। द सेकेंड थिंग इज दैट गंगा का पूरा ये जो हिंदू सिविलाइजेशन जो बना अराउंड गंगा, उसमें कितना डिफरेंस है इन अ सिटी लाइक बनारस वर्सेस इलाहाबाद, विच इज लिटरली 2 hours अवे, बट बनारस का लहजा इलाहाबाद के लहजे से इतना अलग है। How? बहुत बहुत डिफरेंस है। बनारस हैज मैसिव भोजपुरी इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ बिहार बॉर्डर। Hmm. इलाहाबाद हैज अ मैसिव इन्फ्लुएंस ऑफ कानपुर बीइंग वेरी क्लोज टू इट, तो उसका लहजा जो है काफी शुद्ध हिंदी वाला है। बनारस का जो हिंदी Okay. है दैट इज मोर भोजपुरी वाला हिंदी। बनारस का भोजपुरी इज डिफरेंट देन द बिहारी भोजपुरी फॉर श्योर। Mm-hmm. बट And Lucknow, because Lucknow, I always लखनऊ found तो Lucknow is very उर्दू प्यारा. है, हाँ, उर्दू तो है बिल्कुल Hmm. अलग ही मीठी Hmm. जबान है, बिल्कुल ही सॉफ्ट। और लखनऊ इज अ Very प्लेस इन यूपी। respectful. हाँ, Hmm. यूपी के बाकी जगहों से लखनऊ अलाइन नहीं कर पाता है। Oh लखनऊ इज man, डिफरेंट। Lucknow is because I did the episode on Lucknow with Vaibhav and his या, father, Shivastav uncle. या, I have that top of my list. Now Banaras joined top of my list. Now I have to find one for Allahabad. That will again become top. I have to take a एक्चुअली यू कैन 2 week क्लब these three vacation. things in 1 week। पता है इलाहाबाद विल टेक 2 days, बनारस विल टेक 2-3 days, बट लखनऊ विल टेक 3 days as well। एक हफ्ते में तीनों Hmm. हो जाएगा, और तीनों काफी नजदीक है, आसपास है। तो बिकॉज टू डू अ डेडिकेटेड ट्रिप इफ वन इज लिविंग बैंगलोर माइट बी डिफिकल्ट। Yeah. और बना यूपी में 3 चीजें ही सबसे मेन है, इफ यू एक्सक्लूड वेस्टर्न यूपी लाइक आगरा एंड ऑल, आई थिंक ये Hmm. तीनों आसपास हैं। इलाहाबाद से लखनऊ इज लाइक 3 hours 4 hours बाई ड्राइव।
बनारस Okay. से इलाहाबाद इज 2 hours by drive, so you can club it all together. एक ड्राइवर को हायर करो, अच्छा गाड़ी ले लो, and he will take you around. Ideally take a driver from बनारस, ज्यादा फनी होगा वो. Oh, really? Okay. That's a Yeah. good tip. So, ideally, if you're doing the circuit, one should start from Banaras. I think ideally you should land in Lucknow because Lucknow has Okay. more connectivity flight का. एक बार आप Mm-hmm. लखनऊ पहुंच गए, then you are in the groove. उसके बाद you can do train trips, road trips. बनारस, लखनऊ से बनारस आ जाओ ट्रेन लेके 5 घंटे में, और बनारस से इलाहाबाद चले जाओ, इलाहाबाद से लखनऊ वापस फ्लाई बैक कर जाओ. Okay, great idea then. And plus, Banaras to Allahabad has a lot of dhabas, right? So we have to stop बहुत ढाबा everywhere है. and eat. Nah. हाँ, उधर तो आपको गाड़ी से ही जाना चाहिए. 8 लेन रोड है, हाँ. सुपर वे बना हुआ है, अमेजिंग. So you have chosen the mode of transport. I have to enter Banaras only by train. Varna, it's like you will look down upon me, and I have to go to Allahabad only by road. Otherwise, dhaba नहीं हो पाएगा. तो मेरा तो circuit बन चुका है. और खाने के लिए तो I praise बनारस so much, but nothing comes close to Lucknow. No, really. At least that's what I think, because I'm a non-vegetarian and a meat eater, right? Lucknow, matlab, is like everything Bengal has to offer, but better. Excluding the local food, of course. Bengal में तो कोलकाता का जो अपना food है superlative, but Mughlai food of Lucknow is way better than Mughlai food. Which is your favorite biryani in the world? In the world, it's actually the biryani from Dhaka. It's the East Bengal biryani, not the one you find in Kolkata in places. It's called Dhaka Kachi biryani, made by the Hindus of East Bengal. And the restaurant that probably is the most famous one these days in India is called Dada Bodi. It's in Barakpur. Okay. You have to take a train to go to Barakpur, 2 hours from Kolkata, 1.5 hours. And I have tried it only once, but it was on my bucket list for 6 years. I think that's the best biryani I've tried in my life, in the world, and I've tried biryani across the planet. मैं LA से लेके पेरिस से लेके हर जगह बिरयानी ट्राई करता हूँ. दिल्ली से लेके everything I've tried, but Dada Bodi reigns supreme. तो बिरयानी तो मेरा मतलब one of the close to my heart kind of topic है. I can also eat it in biryani. Oh, so we can do an episode of Biryanis of India with you. Sure. बिरयानी तो मतलब मेरे को लगता है कि I've met very few people who know about biryani as much I do, because मैंने academically study किया है बिरयानी को कि कहाँ से origin हुआ. Done hai, chalo. I'm already excited for that biryani episode that we are discussing. So let's definitely plan for that soon. Okay. But for this episode on Banaras, Pushpendra, thank you so much. You're so full of stories and trivia, and laughing along with you was like super duper fun. Banaras has gone up like right up on my list. Yeah, Banaras is the universe in itself. But काफी डिटेल में हमने काफी चीजें कवर कर ली, and of course someone like you who is very fascinated and keen about things and knows already so much, I think काफी मजा आया मेरे को मतलब बात भी करके. तो I had really great time. Me too. And I look forward to hosting you many more times on my podcast. Thank you very much. I had a great time. Pleasure was all mine. It was great fun collaborating on this together, and as you know, right, बनारस मेरा सबसे favorite topic में से एक है. इसके बारे में बात करना is like reliving my own life through different people's lenses and through my own nostalgia. It's a great feeling to talk about it, and thank you so much for hosting me on this and giving me this chance to share this stories with the audience that you have. Done. Very, very happy to do that. Okay. Chalo, thank you so much. Take care. Milte hain. See you. Bye-bye. Bye. Wow. I'm genuinely looking forward to my trip to Varanasi next, and I'm glad that we could bring such a phenomenal episode to you on Banaras. And don't worry, as always, we'll upload a bunch of photographs and details on the city on our Substack and Instagram page. Do head on over there and check them out. We are called Misadventures of a Sneaker everywhere. Also, if you enjoyed listening to this episode, would you like to support our team by buying us a coffee? If yes, you could head on over to our show notes and click on support to contribute any amount you'd like. It'll be a huge morale booster for us. Thank you, and see you in the next episode. Bye-bye.